We hope many more join. Every day we have over 500, and we have even reached 2,500 people in our podcast. We often reach that milestone. So that's all thanks to your love. You join us, and it keeps us going. We have many more plans for our app. This is not even 20 right now. What you see on Trinker is not even 20% of what we have planned. We we want to go way ahead of this point, and we can only do that with your support and love. So thank you so much for that. We'll just start in a moment. Let's wait for some more panelists to join. We have a long list of panelists tonight, and it's gonna be a starry night. So stay tuned for that. Right. So let's begin. We have three of our panelists with us already. आज का जो हमारा guest list है वो काफी बड़ा होने वाला है. So our panelists would keep joining us, and we'll keep talking to them. So let's begin. And I want to start with Manish sir. Manish sir has been there with us, I think, from the very early days, even before the public launch was done. सर से हम लोग सर के पोर्टफोलियोज ट्रैक करते थे ट्विटर पे. वी यूज टू रिलीज वीडियोज ऑफ पोर्टफोलियो जर्नीज, और उसमें हम सर का पोर्टफोलियो जर्नी ट्रैक करते थे कि हाउ अमेजिंग दैट हैज बीन. एंड दिस हैज बीन सर का पोर्टफोलियो भी हम लोगों ने ट्रिंकर मैनेज पोर्टफोलियो भी हम लोगों ने मैनेज किया हुआ था. एंड एब्सोल्युटली मतलब सर यू बीन विद अस सिंस द वेरी बिगिनिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आज भी सर ने हम लोगों को बर्थडे विश किया था थोड़ी देर पहले. थैंक यू फॉर दैट सर. So any I would want to ask you how has your journey with Trinker been, if I can have some words from you. Hi, happy birthday, Trinker ko. Thank you, sir. I mean, Trinker is like is it is the first platform like for me where I went जहाँ पर on the day of Diwali I had my first podcast. Right. so so it's been a bit special in इसके लिए, and the type and the way you people have like graphically आपने जो आपने जो स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग के डेज में the way used to you आपने जैसे ग्राफ बनाया आपने. I mean, Right. कि मतलब वो कि मतलब how they portfolio perform like uh, मतलब तो वो that was interesting enough. तो I mean it's good only. I mean कुछ नया है Twinkle, Yeah. something new. एब्सोल्युटली. अब तो सर वो ऐप हम लोगों ने हमारी जो ग्राफ्स हम पहले वीडियो एनिमेशंस अलग से बनाते थे, वी हैव एम्बेडेड दैट इन आवर ऐप. तो Okay. यू कैन एक्चुअली सी दैट कोई भी पोर्टफोलियो ट्रेन कर रहता है, यू कैन एक्चुअली सी इट्स जर्नी ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स लाइव, कि आप कभी 1 वीक 1 मंथ, एंड दैट गेट्स अपडेटेड एवरी मतलब Yes. एवरी डे. तो that's now become a feature. Starting from there, of course, inspiration आप लोगों के बढ़िया पोर्टफोलियो से आया था, and that's become a live feature now. So that's all thanks to you. Most welcome. सर थोड़ा सा और मार्केट की बात भी करना चाहता हूँ आपसे, कि अभी एक Mhm. नई रैली इट सीम्स अच्छे से शुरू हो चुकी है. So Mhm. what are your views on overall Nifty? And then I also want to ask you, abhi in the given this current scenario, what would be there in your budget list, on your stock list? I know एक stock मुझे already पता है, Inox is आपका hot favorite, and दिवाली पे आपने वो दिया था, and trust me sir, Yes. I bought it the very मतलब दिवाली पिक में जो दिवाली का हाँ ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें मैंने वो हाँ खरीदा भी हाँ. था, and I'm still Okay. holding it. Okay. नाइस. एक्चुअली लाइक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2021 में नवंबर एंड से दिसंबर आई मीन एवरी मंथ वी हैव गॉट वन और द अदर करेक्शन मिला है करेक्शन आई मीन. लेकिन नवंबर एंड में जो शुरू हुई थी करेक्शन विच हम्म. वेंट टिल दिसंबर तक 20 तारीख तक आई मीन दैट करेक्शन वाज दी वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट करेक्शन इन 2021. हम्म. ठीक है उस वक्त आई मीन उस वक्त आई मीन इट वाज ओनली द बैंक इंडेक्स जो कि वीक हुआ था एंड तक. एंड अदर देन दैट सेंसेक्स निफ्टी वे आर स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग. सो आई मीन
बियर जो उस समय जो करेक्शन आया था, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई मीन वी लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी करेक्शन आएगा बुल मार्केट में, वी लुक टू बाई एज लॉन्ग वी फील द अंडरटोन स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज स्ट्रांग। सो सो दिसंबर was was ऐसा एक पीरियड था जहां पर आई मीन वी वर गेटिंग इंडिकेशन फ्रॉम स्टॉक्स and indices like Reliance, Dow Jones, Nifty, Sensex, which were standing very strong, and on the other hand, Bank Nifty was the only index which was trading weak. जो कि 31st दिसंबर को it gave a fantastic closing above 35,400, और उसके बाद में the movement has been one way throughout. So the best, I mean, मतलब in the period of crisis or in the period of pain or turbulence, उस समय अगर बाइंग, उस समय जो बाइंग करने का जो फन है वो ऊपर बढ़ने के बाद उतना नहीं रहता, बिकॉज उस वक्त आई मीन द रिस्क जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। आई मीन बाइंग इन दोस पीरियड, बैड पीरियड, व्हेन यू थिंक कि मार्केट का अंडर स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है, सो यू सो उस समय बाइंग किया हुआ, आई मीन वी गेट थिंग्स एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। सो वहां से विद इन 10 days, आई मीन वी आर नाउ वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाइज। आई मीन निफ्टी इज जस्ट 400 पॉइंट्स, 200 200 या फिर 400 पॉइंट के आसपास उसका ऑल टाइम हाई है। उसके बाद सेंसेस का भी वही हाल है। सो वी हैव सीन ए फैंटास्टिक अपसाइड इन द लास्ट 8-10 days. Up, what next ahead? I mean now we are standing in the ऐसे ऐसे एरियाज में है जहां से मतलब कुछ लाइक इंडेक्स लाइक निफ्टी अगर 18,320-50 के आसपास ऊपर अगर बंद कर देता है, देन वी विल गेट इनटू अ न्यू ब्रेकआउट रेंज आल्सो। सो और आज जैसे आज का जो मूवमेंट था उसमें मतलब मेटल्स इंडेक्स में अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, और वंस इट प्रोसेस, I mean the Nifty Metal Index, which has today closed at 500,882. I mean 6,000 के आसपास उसका रेंज है, और 6,020 के ऊपर में it will be in a ये multi-year breakout. So this is one place to look after. और like इस बार like banking में we have seen कि ICICI Bank has been the best performer in this like इस बार जो क्वेश्चन आई है उसमें ICICI Bank has emerged as one of the best bank in terms of performance, Right. right? Yeah. Yeah. Absolutely. एंड वन मोर Yeah. थिंग, आई Yeah. मीन इस बार आई मीन जो कोविड का जो फियर है, आई मीन Hmm. इट्स मोर, आई मीन ग्राउंड में लाइक यहाँ पर भी इतने लाइक उतना फियर दिखता नहीं है जितना कि फियर लाइक टीवी में है या सोशल मीडिया में है। Hmm. सो व्हाट आई फील कि और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई मीन फ्यू प्लेसेस के फ्यू प्लेसेस छोड़ के कहीं भी कोई बंद बंद नहीं हुआ है। Hmm. सो Hmm. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द मतलब दैट माय स्टॉक, आई मीन आइनॉक्स लीजर, आई मीन आई होल्ड द स्टॉक, Right. and like we have seen a good correction in that, and hopefully I think in the next 1 month things will get okay in that Hmm. regard as well. राइट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर। तो सर इस अभी भी मतलब करेंटली गिवन एक तो आपका हॉट फेवरेट आइनॉक्स है, व्हाट एल्स व्हिच एल्स स्टॉक्स आर देयर इन योर स्टॉक लिस्ट, वुड इन योर वॉच लिस्ट राइट नाउ? आई मीन एक है एनएमडीसी है, जिसने जो आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है एंड ऑफ द ये लास्ट 30 मिनट्स में। हम्म। उसके बाद टाटा मोटर है, वो भी हम्म। आज स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है 510-11 के ऊपर में। हम्म। सो आई मीन दीज आर फ्यू स्टॉक्स, मतलब सम इन मतलब मोटर में टाटा मोटर्स के मतलब मेटल्स में एनएमडीसी है। उसके राइट। बाद में आल्को है, आई मीन वो ऑलरेडी ब्रेकआउट पे ही है। राइट। एंड रिलायंस भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, 2500 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम्म। सो आई मीन स्टॉक तो मतलब देयर आर मेनी स्टॉक्स, हम्म। बट वही है कि मतलब लाइक ट्रेडिंग के लिए ही है, राइट। पर्सपेक्टिव वही है मतलब दिमाग में। एब्सोल्युटली।
Great, sir. It's always so much fun talking to you, and बहुत जल्दी I want a separate dedicated session with you also. आपसे बहुत कुछ सीखना भी है. श्योर। एक अलग से हम लोग करेंगे. I think अभी तक हम लोगों ने वन ऑन वन पॉडकास्ट आपके साथ नहीं कर पाए. नहीं एंड हुआ। बहुत टाइम से मेरी इच्छा है आपसे बातें करने की, आपका पूरा प्रोसेस समझने की, आपको अच्छे से आपकी जर्नी समझने की. तो बहुत जल्दी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली आइएगा विल किसी डू दिन. वंस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। Thank you so much, sir, for being with us in this journey. We wouldn't have been here without you. Thank you so much, sir. थैंक यू। Right. So next we have, so some more panelists have joined us. Once again, many more people have also joined us since we started, since we started last year and since we started tonight as well. So welcome everybody. It's our birthday tonight. हम लोग this podcast, the main aim of this podcast tonight is to express our gratitude towards our beautiful audience and of course our stock market experts जिनके बिना हम लोग आज यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे नहीं होते. We have over 25,000 investors on our application within a span of just 3 to 4 months of its public launch. And एक साल हो गया हम लोगों ने जब ये बनानी शुरू की थी. तो this is a big moment for us and thank you so much for all the support that you have given us. And of course we are giving away there's a to celebrate this occasion. There's a tweet pin on our profile. वहाँ पे there's a portfolio which we have curated with some of our top experts. You can invest in it with 3,000 or more, and you get a 300 rupees cashback. Of course, there is no charges from Trinker's side, so it's 10% return immediately that you get. Zerodha Pay aftermarket orders we support here, through which you can place these orders, or you can buy it in the morning. Tomorrow all day, if you invest 3,000 or more in these stocks, you get 300 rupees cashback. It's a celebratory gift from our side to you. We hope that this portfolio will do really well over the coming next 1 year. Already आज ही portfolio बना है ये. It's a fresh portfolio to enter and it's already given 1% आज में up हो गया. So I am very happy because uh, मैंने आज ही इसमें इन्वेस्ट किया था. इनफैक्ट इफ यू गो टू माय पर्सनल प्रोफाइल विशु कार्तिक जो इस समय को होस्ट की प्रोफाइल है, इस पे द थर्ड ट्वीट दैट इज देयर, उसमें एक वीडियो है इन विच आई हैड टुडे वी हैड अ लाइव सेशन इन द लाइव पॉडकास्ट सेशन इन द आफ्टरनून 12:30 to 2:30, जिसमें कि लाइव आई इन्वेस्टेड इन दैट पोर्टफोलियो एंड आई रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑफ इट एंड पोस्टेड इट ऑन माय ट्विटर चैनल. You can go and check it out. It's very easy to invest in. Just it's a 20-second video, so you can understand how easy it is to invest in this portfolio. And you get a 300 rupees cashback. So on 3,000 plus investments, there is an immediate return on that. So you're most welcome to invest in it, and we'll be happy to have you as part of the Trinker family investors. So all right, so let's get to our next expert, Joy Mukherjee sir. Joy Mukherjee sir is an absolute favorite of everybody in Trinker. सर का पोर्टफोलियो भी हम लोग पता नहीं कब से ट्रैक कर रहे हैं. सर इतने स्वीट हैं. वी आस्क हिम, वी हम लोग जब मन करता है सर को परेशान करते हैं. हम लोग को ट्रेडिंग आवर्स में भी सर बहुत डेडिकेटेडली ट्रेडिंग आवर्स में बात करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं. एंड उसमें भी हम लोग उनको परेशान करते रहते हैं कि नहीं अभी हमें आपको इस पे कमेंट चाहिए आपका. वी हैव अ समथिंग कॉल्ड ट्रिंकर पल्स, जिसमें कुछ अगर सडन मूवमेंट्स मार्केट में आते हैं, कुछ होता है बड़ा न्यूज, तो हम अपने एक्सपर्ट्स को कॉल करके उनका ओपिनियन पूछते हैं. हम लोग अक्सर ही जॉय सर को पूछते हैं कि सर आप अपना इस पे ओपिनियन दो. एंड सर सो काइंडली, सो स्वीटली टाइम निकाल के अपनी ट्रेडिंग के बीच में हम लोगों को वो अपनी ओपिनियन भी देते हैं. And of course, his portfolio is one of the best on Trinker. It has got one of the highest number of investors. It is among the highest performing portfolios on Trinker right now, and it appears right on the top. अगर आप अपना एक्सप्लोर सेक्शन में जाओगे हमारी ऐप पे, तो शुरुआत के ही टॉप 5 में सर का हमेशा रहता है पोर्टफोलियो. तो जॉय सर, आपसे भी मैं एक छोटा सा, आई कैन हैव अ फ्यू वर्ड्स कि कैसी रही अभी तक आपको ट्रिंकर के बारे में कुछ, इफ आई कैन हैव समथिंग फ्रॉम यू. Thank you for your good words, Visu. And really, it was a great journey. Like since when we have started working with this venture, so it is a very good platform and very much trustworthy. That everything is verified. There, people can trust this data and all the stocks, the whole platform, and everything very much user friendly. So that thing, I think this part is very useful, very much effective for any freshers or any trader, any investors. It was a very good journey that we. It is almost 1 year. Happy birthday for Trinker, and and it was really good journey for me as well because we have
we have this kind of exposure to create a portfolio, a public portfolio, so that we can continue, we can go with a public portfolio that is very, very similar to other fund managers are doing. It is just like that, that we are managing a portfolio in front of all, and it is all public. There is nothing to hide, and this part is very good, that everything is very much clean and clear here. So everyone can see the returns and everything, they can trust the returns, and they can go with their real money as well as per their own wish. So everything that I have seen here, it is really good, really authentic, and I wish all the best. And definitely I wish I will be there with you for a long time as well. Absolutely, sir. मतलब आपको तो होना ही पड़ेगा. Your portfolio has been on the very top since the platform was launched, and मतलब I am very sure that this is gonna stay on top forever. Sir is one of the best in the market. I'm very sure of it. Another great part about Joy sir that I find is, मतलब it's not great. It's mesmerizing. I'm always amazed at his speed. जैसे आप उनसे हम लोग often we hold these sessions, and if you ask about, so हम लोग we in fact today also we'll try to take up some questions from audience. Stocks की list आती है सर, एक look में इतनी तेजी से analysis होती है सर की कि मतलब जितनी देर में मैंने कल परसों में भी यही चीज बोली थी कि जितनी देर में मैं ये सोचूं कि इसमें टाइम फ्रेम कौन सा देखा जाए, उतनी देर में सर की एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी होती है. So absolute kudos to you, sir. Hats off to you. Of course, you can check out Joy sir ka portfolio, and it's there in the on the very top of our. If you open the explore section, तो उसमें fifth portfolio sir का है, 135% returns रहे हैं since January 1 sir के, and this has been, I have personally invested in sir's portfolio, and the graph like we discussed sir का जो journey रहती है, this is so amazing. वो ऐसे अलग ही डायरेक्शन में वो रॉकेट बना के ऊपर जाता है 45 डिग्री एंगल पे, एंड निफ्टी हैज स्टेड समवेयर अराउंड 10-20 डिग्री एंगल्स. तो वो निफ्टी इज एक्चुअली अप 30% सिंस लास्ट ईयर, सर इज 135% अप, सो दैट इन इटसेल्फ इज मोर देन एनीथिंग आई कैन से. And thank you so much, Joy sir, for being a part of Trinker, and we wouldn't be here without you. नेक्स्ट ऑफ कोर्स सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज योर व्यू ऑन निफ्टी. आज भी काफी अच्छा रन रहा, तो मतलब काफी अच्छा रन तो नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट वो कंटिन्यू तो हो गया जो अभी वो था. तो क्या व्यूज हैं, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज देयर इन योर वॉच लिस्ट? जॉय सर, हेलो. राइट, सो दिस हैज बीन एन इरिटेटिंग एस्पेक्ट सो फार कि हम लोग स्पेसेस करते हैं, बट हमारे स्पीकर्स को ट्विटर रिमूव करता रहता है. वी आर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, इसको कैसे ठीक किया जाए, बट वील डेफिनेटली गेट दिस सॉर्टेड वेरी सून. जॉय सर हैज जॉइंड अस बैक अगेन. राइट. Yes, sir. So thank you so much, Joyce. I was just thanking you. Thank you for being with us. And I also asked if I can have some words from you on Nifty का क्या opinion है. The bull run is apparently in place, well in place, and what is there in your watch list for now? Well, for Nifty, as I said yesterday as well, that Nifty already बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है, तो इस लेवल से निफ्टी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. इट इज़ ट्रेडिंग नियर द सप्लाई जोन, सो ये शायद ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्मॉल अप एंड डाउन्स के साथ ही जाएगा, बट अल्टीमेटली ब्रॉडर मार्केट विल आउट परफॉर्म, and that is the sweet spot at this point of time. So Nifty, my view is it is well strong enough, and but at this point of time I think the 18,500 kind of level that will create some pressure. Higher levels पे थोड़ा pressure रहेगा. Absolutely. And sir, थोड़ा सा if we can know about your watch list as well. Yes, watch list. Yes sir. Can you please repeat once again? सर, आपकी वॉच लिस्ट में अभी कौन कौन से स्टॉक्स होंगे? कौन कौन से स्टॉक्स में से एक्चुअली देयर आर थ्री पर्टिकुलर सेक्टर्स लाइक ऑटो, इंफ्रा एंड एनर्जी. These three particular sectors are looking good,
So I would like to go Okay. with them stocks, the best stocks among them. And you know that every day new stocks will perform. Like ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टॉक कंटिन्यू करेगा पर आज अगर कोई एक स्टॉक परफॉर्म किया है तो वो नेक्स्ट 2 3 4 डेज थोड़ा टाइम लेगा. So like that, as I mostly active in intraday trading or short-term trading, so I try to find new opportunities every day. So I will try to go with these sectors mostly, and whoever is performing, I will go with them. Like Tata Motors All अच्छा right. अच्छा है आपका. At this point of time आपका M&M अच्छा लग रहा है. These two stocks I think looking good. एब्सोल्युटली. एंड सर थोड़े दिन पहले सर ने एक बहुत हम लोग का पॉडकास्ट हुआ था, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक सर ने आइडेंटिफाई करके हमें बताया था, दैट वाज रेडिंगटन. Right, right. एंड वो मैंने सर उसी दिन किया हुआ है. दैट वाज अ मैसिव वॉल्यूम्स के साथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट था. आई एम होल्डिंग इट एंड आई एम बस वेटिंग इट आउट. आई होप बहुत जल्दी हमें मजा आएगा उसमें. डेफिनेटली जस्ट आई टेल यू एक दिन रैली के बाद थोड़ा टाइम लेता है 2 4 दिन अभी ऑफ यहाँ पे कोर्स, ऑफ कोर्स. रुकेगा उसके बाद फिर से जाएगा जस्ट लाइक वी वे आर टॉकिंग यस्टरडे अबाउट रेन इंडस्ट्रीज राइट यस्टरडे या कोई समवन वाज आस्किंग तो आज देखिए या रेन इंडस्ट्रीज रैली दे दिया आपको थोड़ा मूवमेंट दे दिया तो लाइक दैट एब्सोल्युटली, ऐसा ही होता है ना थोड़ा टाइम लेकर फिर से जाएगा. एब्सोल्युटली. Great, sir. Thank you so much once again. And definitely, we wouldn't be here without your support, sir. You are an amazing expert. Absolutely amazed by you. Thank you so much for being a part of Trinker, sir. Thank you. Audience, you can check out sir's portfolio. It's right there on the top portfolios. Generally, I could share a link, but sir, it's right there on the top. So just open our app. If you don't have it already, you can use the link that has been on our profile to download our app. And in the top portfolios, you'll find Joy Mukherjee's stock. And of course, you can also see which stocks is he holding. You can see his journey. You can see the kind of returns he has generated. जो मैंने बताया भी 135% over the last year. Invest in it. You'll start getting notifications whenever sir trade in it. Absolutely. Thank you so much, sir. Right. Next, let's welcome our next guest. So, Joy sir and Manish sir have been with us since quite a long time. Next, I want to talk to someone who has joined us recently. Profitbigbull sir is there with us. उनका I think last month ही हम लोगों ने पहला podcast उनके साथ किया. मेरी भी उनसे recently बातचीत शुरू हुई and in a very short span of time, I think Profitbigbull sir काफी अच्छे से हमारे साथ जुड़ गए हैं. मेरी पर्सनली भी सर से बात होती है एंड आई व्हेन आई टॉक टू हिम आई फील समवेयर आई फील देयर इज अ कनेक्शन जिसमें कि सर से बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ मैं बात करने में. आई एम एब्सोल्युटली अ फैन ऑफ हिज प्रोसेस. हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट किया था उनके पोर्टफोलियो पे, उनकी प्रोसेस पे एंड आई वाज एब्सोल्युटली अमेज्ड बाय इट. सर इतना मतलब ही इज the beauty of it is he has simplified the process to boil it down to such simple things. उनके कुछ rules हैं जो कि वो follow करते हैं and then through that he has generated such massive profits and massive brilliant portfolio he has created. मैंने उसमें पर्सनली खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है. आप सर का भी पोर्टफोलियो चेकआउट कर सकते हो, उनके स्टॉक्स कर सकते हो ट्रिंकर पे. प्रॉफिट बिगुल सर, इट्स बीन मतलब हाउ हैज योर जर्नी बीन विद ट्रिंकर इफ आई कैन हैव अ फ्यू वर्ड्स. Okay. Thank you, Vishu. And first of all, a big congrats to Tinker on completing a year. And would like to congratulate on a hard work that has been done by you, Yash, and other team members that are behind the scenes working for Tinker. Uh, the best thing that I would say that I like about Tinker is that we are investing our hard money and there is no paper trading. So I think this is the best part. On top of it, if I have to say, the USP of Tinker is the late night podcast that you and your team organizes gives me immense knowledge. Like like today we are having so much experts and everyone have their different things to speak on market. So it gives me immense knowledge as to how the other people are thinking. And as we know, stock market we learn every day, and I certainly can say that I have learned a lot from the platform. And the podcast, the first podcast that I did, that was the first thing for my side, wherein I shared the process as to how I select the stocks.
So a big congrats to you and your team. I think they are doing really brilliant job. So from my side, I think I will definitely be associated with you guys for, I think, whatever journey I will be there in stock market. So I think it's the best innovation that you have created in stock market, and a big congrats and congratulations to you, especially, and Tinker family as well. Yeah. Absolutely, sir. And again, that was also one of the first days जब मैंने live podcast में किसी portfolio में invest किया था, तो that the first portfolio that was of Profit Big Bull sir, हम लोग podcast कर रहे थे, sir ने हम लोगों को कुछ एक pointers दिए थे कि sir का process I still remember कि आप sir 70-30 रखते हो Yeah. अपने fundamental technical, and you gave us a list of 8 to 10 points जिसमें कि what fundamentals one should look for and then go for technicals, and it was absolutely amazing. मतलब that was the day I realized कि मतलब कितना how beautiful your process is कि it's so simple that you made it look so simple कि इतना आसानी से हो जाता है, but I'm sure उसमें कितना उसमें आपने trial and error experiments, that experience boiled down to such one simple beautiful podcast that was. And I was immediately convinced, and I had invested it right there in the podcast. And Yeah. uh, absolutely, sir. So next, of Yeah. course, I would love to know your thoughts on current stock market, कैसा होने वाला है Okay. next year. Vishu, as per me, 18,300 to 18,500 is a resistance zone as per option chain data. I think this is seen to, and the supports is lying between 17,800 to 18,000. That is what option chain data is giving us. And if I see, I usually follow zigzag method. So if I see higher high, higher low pattern, so 17,640 is the level to watch out. I think once we close below that level, then only bears will be active. And if I have to look at Bank Nifty, 39,000 to 38,500 is a resistance as per option chain, and 37,500 is the level wherein higher high and higher low uh, will be tested. So any dip is a buying opportunity. I don't know when the dip will come, because if you saw Wipro results was not good and it fell 5%. If Wipro fell 5%, 5% Tata Steel went up. So it is something that I have said in the previous podcast as well. I don't think we should bet on Nifty. I think we should be stock specific, because they will not allow Nifty to fall. As simple as that. They will make sure the stocks will give breakout, like Joy sir said, Reddington, even Kitex, any textile stock, Page Industries. You have seen so many breakouts in cash stocks that are happening. Even my portfolio, Shivalik Biometals, I think I have been bullish on this stock from 60 rupees. Arihant Capital, I have invested in 150 and it went to 280. So in cash stocks, there will be breakouts on the basis of news or anything like that. But I would say to everyone that don't bet on Nifty or Bank Nifty, because let's say I give a hypothetical thing. Let's say HDFC Bank has a bad result and it falls 5%. So what operator will do? Operator will give a breakout in Kotak, or operator will give a breakout in Axis. So let's say if HDFC Bank is dragging Nifty or Bank Nifty 100 points, so Kotak को उठा दिया जाएगा 100 पॉइंट ऊपर करने के लिए. So आपका इंडेक्स में पैसा नहीं बनेगा, but you have to be stock specific. So I would at this point of time, I would also refrain uh, betting on metals. I know every one is bullish on metals. So it is something news based, because 2 days back there was a news that Jeffries ने कट कर दिया, metals गिरा दिए. आज metals उठा दिए. वो metals उठे क्यों? क्योंकि IT गिरना था. So I would not prefer that anyone should trade on news. कल कोई और news आएगी, फिर metals गिरा दिए जाएंगे. So it is just an index management that these guys are doing. So I would prefer three sectors. I think the first sector is capital goods. I think if you see L&T, Siemens, even Havells is at a support at 1320. Even Voltas is at triple top at 2080.
So I think capital goods sector is looking really, really good. Even industrial stocks, like I have given 3 days back, Adani Enterprises, Adani Port, all the industrial stocks where there will be breakouts in FNO stocks. And the second sector I'm very bullish is power sector. You look at power companies, whether it is Tata Power, KPEL, Ratan Power, even Adani Power is also looking good. Reliance Power. I think all the power stocks are looking really great. I think after textile, if I am bullish on any sector that is a power sector for next 5 years, I think it will create wealth for the shareholders in coming 3 years. That is for sure, because if everyone is bullish on EV, so EV को जरूरत पावर की है, तो पावर उठेगा ही उठेगा. And way our economy is growing, infrastructure is growing, I think power is the theme that is gonna sail our ship through, and people can make hell lot of money in power sector. And the another sector that is looking really good is telecom sector. I think if I look at Indus Tower uh, uh, or Bharti or Idea as well, I think the other stocks like other IITL, I think telecom, even I know TTML went from 500 to 260. Now it will fall down, but in telecom, I see institutions are betting big. So as per me, I think these three sectors you should focus till budget: capital goods, power, and telecom. And as per me, these sectors will outperform Bank Nifty, IT, or metals, or anyone, because that is where I think the power lies. And if I have to select the stocks, I think today, if you can see, anyone can see the chart of CDSL. I think uh, today it broke 1580 after 16 December. And if you see the hourly candle and the volume, and I today checked the delivery as well, I think that stock is heading towards 17 to 1750 in near term. And the another stock that I am looking is SW Solar. It is again from a power side, and Havels and Voltas is, and L&T. I think those are my bets for coming week. That is my view on Nifty. I think we should डिप कब आएगी, 18,500 पे है, 18,600 पे, आई डोंट नो. वो एक ही दिन होगा जिस दिन सब स्टॉक्स गिरेंगे. सो I'm not sure dip kab aayegi, but I would not prefer betting on index. One more thing I want to uh, 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 give a perspective is, if I look at February month PCR, put call ratio, uh, I think it is at, I have not seen that put call ratio. I'm in this market for last 4 years. I think I have not seen that put call ratio ever in my lifetime. It is at 2.8. So out of money calls are so expensive of February month. I don't know what institutions or what people are thinking ke 21,000 chali jayegi. If I recall last year budget, where market went from 13,700 to 15K, it was due to put call ratio. The put call ratio was around about 0.5, 0.6 at that point of time. And if I see February month put call ratio, it is at 2.8. So I'm not saying that market will fall uh, just right now, but way the premiums are not even today. Bank Nifty went 300 points down. The premium was not giving, the put premiums were not increasing. So at that pace where the call premiums were increasing when the market was going in bull run from 1400 to 18K. So this is something I am watching, and I would be cautious till budget. I think we should not bet on index. We should be stock specific and sector specific. That is my point of view in Nifty. Yeah. राइट एब्सोल्युटली सर. एक स्टॉक के बारे में और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. सो आई मतलब नॉट ओनली गेट टू होस्ट द शो, बट एक मेरे को स्पेशली मिलता है मेरी और भी टू अरेंज पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. बैकग्राउंड में भी बात होती रहती है. सर थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक और स्टॉक डिस्कस किया था, विच वाज केमकॉन. Yeah.
तो मैं of course So I want, so जो knowledge मुझे मिली, I want this to share it with everyone. तो प्लीज उसके बारे में भी प्लीज कुछ बताइए. So okay, if you look at that stock, Camcon it's in the chemical space, and if you look at that stock of return on equity and CAGR, I think that stock is giving 31% CAGR for last 10 years. I think it is just trading at throwaway valuation. I think market has to reward that stock. That is my feeling, that by 2 to 3 years on every dip, if you will buy it, uh, you can I think double is the target for that stock. The reason is it's basically into raw materials. There are I have a very good feeling that that company can touch. Currently, it's trading at near 380. I think 700 is the target for next 2 to 3 years for me. That is for sure. That because it is just trading at throwaway valuations, and promoters holding is also good. Debt-free company, pledging is not there. Everything looks good on that company. So I would appreciate you should study these things at screener.com. There are a lot of sites like Grow, Screener, wherein you can have a look over the company, how the sales are going, how the profit is going. Has is that company given returns to its shareholder or not? So that company has given 30% return in last 10 years. So according to me, it is just trading at throwaway valuation. One should look at that stock. I think double is the target for me if I have to consider, because that is the company to watch out for next. And chemicals is in the fray, you know that. So that I'm really bullish on that company. Yeah. Right. Great, sir. Thank you so much for sharing that with us, sir. And Yeah. thank you so much for us being associated with Trinker. I hope it definitely has added so much significant value to Trinker. Thank you so much. And I hope बहुत आगे तक मैं आपके साथ जाएंगे सर हम लोग. Thank you, Vishu. Thank you all. Yeah. Thank you so much, sir. Next, of course, I want to talk to one of the biggest stock market experts in the industry today, stock market scientist. He is a mystery. He is, nobody knows. I know him. I know his name. I feel lucky that I know who he is. But coming from a place where nobody knows who you are, and still so many people trust you, they follow your calls, they follow your process, they learn from you, that in itself speaks so much. And of course, Trinker pe bhi sir, even before our public launch, stock market scientist sir has been there with us. We have been tracking his portfolio since before our launch, and massive, absolutely massive returns. He's got the second highest followed portfolio on Trinker. Unke returns are one of the highest, absolute highest, and that speaks to his talent, his skills, his knowledge, his experience. And there's so much we can learn from you. And of course, it's not just stock market key calls that he is associated with Trinker with, that he has a portfolio, but in general he has been there. He's a part of a Trinker. I can say he's a part of Trinker family, of course. And आज जहाँ भी हैं उसमें इतना probably one of the biggest सपोर्टर्स ऑफ ट्रिंकर एंड बिगेस्ट रोल ट्रिंकर को जहाँ पे हम खड़े हैं, उसके लिए स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट सर हैं. एंड इवन पॉडकास्ट भी हम लोगों ने जब शुरू किए थे तो वी डिस्कस विद सर. एंड सब काफी ट्रिंकर का ही पार्ट है, मैं तो मानता हूँ सर.
Market scientist, sir, if I can have some words from you, how is your journey? Vishu, one thing. Yes, I sir. think he starts इसका जो name start with P only, if I'm right. Sir, I can't say that. चलो. So market scientist sir इस पे कुछ जैसा बोलना चाहे तो he can tell. Sir, are you there with us? Hello, sir, you're on mute. Yeah, hi Vishu. Hi, Good sir. evening. First of all, lovely. Thank you for lovely introduction, and it's all your, So my gratitude to all the people who are there in the panel, and I'm no one to have that kind of talent and all. It's all your support and it's all your encouragement. Basis that whatever I'm doing, you are supporting that and you're appreciating that. And I guess whatever support or whatever whatever knowledge I have or whatever I've learned in last 9 8 9 years, right, in stock market or in my personal life. So I'm just sharing that, and I'm just and it's feel very proud to be associated with a platform like Trinker, which is doing fantastic job for people, or just to democratize this entire process जो चल रहा है अपना, and helping the newbies or all the people who are there in the stock market. तो ऐसा कुछ नहीं है. I'm just helping, I'm just doing my bit. And as you know, जैसा विशु ने बोला कि this is my social goal, right? And cause of Trinker and cause of this entire setup and all, somehow I'm pursuing my social goal as well, कि चलो लोगों का हेल्प हो वहां पे, और लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में और ज्यादा इन्वॉल्व हो और ज्यादा सीख पाए, और हम लोग भी कुछ सीख पाए उनसे, है ना. ये चीज है. So it's a common exchange of ideas between all of us. ये चीज है. ऐसा नहीं कि हम लोग ही सिखा रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, right? So Absolutely. that's it. Absolutely, sir. And but sir, मतलब that is your humility कि आप बोल रहे हो कि सब वो कर रहे हैं, but I mean I genuinely am a fan of your style. आप जो stock markets की psychology भी है उसमें मतलब I don't know anybody who has a better command than you. The way you explain your concepts, the way you have models that work so well in the stock market. आपका techno फंडा तो है ही है, psychology का उसमें तड़का लगता है, and that every time it's a blockbuster. So sir, of course I want to ask आपके भी निफ्टी पे views and I want to ask your stock list, but I want you to take us through a model. आज भी होना ही चाहिए stock market scientist सर का एक मॉडल, छोटा सा ही सही, कोई भी, even if every day we have repeat listeners of course, but कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं, तो उनके लिए even if we can have some model psychology का. So Vishu, like हम लोगों ने कई बार ही शेयर किया है. So what is my belief? My belief is to have a right thought process, irrespective of your field. कहीं पे Hello. Right. So this is a problem we have been facing. Our regular audience would be aware of this. बीच में तो अभी काफी ज्यादा thought problem. process होता है बड़ा biased होता है ना. हम लोग Hello. बोलते हैं ना न्यूबीज होते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं. गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है बड़ा बायस्ड होता है. ये करें कि नहीं करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना करते हैं, नुकसान होता है और वो फीस भरनी पड़ती है, या मतलब जो भी है, कहीं ना कहीं हम जब सीखते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस उससे इम्प्रूव होता है. तो मेरा मानना ये है कि जितना थॉट प्रोसेस आपका शार्प होएगा और जितना जल्दी इम्प्रूव होएगा, उतना आप कम गलती करोगे और उतना आप मार्केट में ज्यादा जल्दी सक्सेस हो सकते हो, या कह सकते हो कि बड़ा सक्सेस पा सकते हो. दोनों चीजें हैं. लेकिन जब तक आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं होएगा ना, मतलब तब तक आप ये मान ले कि आपको कितना भी साल लग जाए, मतलब आप हम लोग अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के से मिलते हैं, हम जानते हैं कि 10 साल उनको मार्केट में हो गया लेकिन सक्सेस आया नहीं. मतलब कहीं ना कहीं गलती जो एक एक ऐसी गलती है जो कर ही जा रहे हैं 10 साल से ही, और राइट, और एक ऐसा ट्रेट है जिसको फॉलो भी कर रहे हैं लेकिन वो गलती ऐसी है कि उसकी वजह से मतलब ना तो कमा पा रहे हैं, ना जो खोया है उसको पा पा रहे हैं.
मतलब नेट नेट आप देखोगे तो ज्यादा ग्रो नहीं किया 10 साल में, है ना, और 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है। तो मेरा मानना है कि थॉट प्रोसेस जो है वो सही होना बहुत जरूरी है। मार्केट के लिए अगर मैं बात करूं तो दो ऐसे मॉडल हैं जो मैं हमेशा शेयर करता हूं। पहला मॉडल है आपका क्यूबुलर रॉस चेंज कर्व, बिकॉज मार्केट में चेंज मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, राइट। इफ यू आर ए स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट और इफ यू आर इन ए स्टॉक मार्केट, तो आपको चेंज होना बहुत जल्दी पड़ता है, कई बार होता है ना, बीइंग अ ट्रेडर एज वेल, मतलब स्पेसिफिकली पीपल हु आर ए ट्रेडर। ट्रेडर को हो सकता है, सपोज करो आपने आज पोजीशन बनाया और आज ही मार्केट का सेटअप खराब हो गया, 2 घंटे में 3 घंटे में, तो हो सकता है 3 घंटे में आपको बदलना पड़े। लेकिन जल्दी से लोग बदलते नहीं है। लोग को लगता है कि नहीं यार ये तो हो सकता है वन ऑफ हो, अगले दिन फिर देखते हैं अरे नहीं यार ये तो कंटिन्यू हो रहा है, और करते 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 इतनी देर हो जाती है, जब तक हम बदलते हैं ना तो हमारे लॉसेस बहुत हो जाते हैं, या फिर हम जब बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे लॉसेस इतने हो जाते हैं हम बदलते ही नहीं है। हम बोलते हैं कि यार चलो हम नहीं बदलेंगे, अब मार्केट जब बदलेगा तो हम अपने पोजिशन को एग्जिट करेंगे, ऐसा होता है। ये मोर देन 70% लोग के साथ होता है, ये आप मान के चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूबुलर रॉस चेंज कर्व करके एक मॉडल है, जिसके बारे में हम लोग कभी ब्रीफली चर्चा किए थे और फिर कभी करेंगे। काफी मतलब लगने में बड़ा छोटा मॉडल है, 5 स्टेज है उसके, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका पूरा होता है शॉक से, और फिर वो ग्रीफ और वो सॉरो, वो सारी स्टेज आती हैं इसमें। लेकिन आप इस मॉडल को गूगल करिए और इसमें जानिए कि जब जब भी सडन कोई शॉक आता है, जैसे मार्केट्स में आ जाता है, आपने पोजीशन किया हुआ है और सब कुछ ठीक है, अचानक से कुछ हो गया, 1-2 घंटे में 3 घंटे में मार्केट का सेटअप खराब हो गया, सो हाउ यू नीड टू चेंज, राइट। मेरे ख्याल से क्यूबुलर रॉस चेंज कर्व से बढ़िया आपको कुछ सिखा नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और जिसको लगता है कि ये गलत है, तो मेरा मानना है कि जिस दिन हम इस पे स्पेस करेंगे ना स्पेसिफिकली, उस दिन आप भाई क्वेश्चन पूछना। ऐसा नहीं है कि हो सकता है गलत भी हो किसी के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि चेंज मैनेजमेंट के लिए इससे बढ़िया मॉडल हो नहीं सकता। क्यूबुलर रॉस चेंज कर्व है, और ज्यादा बढ़िया आपको बेटर वे में चेंज मैनेजमेंट अपना इंप्रूव करना है, तो इसमें आप विलियम ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल एक होता है, उसको जरूर इनकलकेट करें इसी के बीच में, जिसमें 3 स्टेज होती हैं, राइट। कि एक चेंज आया, उसके बाद आप न्यूट्रल स्टेज पे होते हैं, और फिर एक नया न्यू बिगनिंग होती है, ऐसा करके। तो गूगल करिएगा, थोड़ा सा आप जानिएगा, जब हम कभी स्पेसिफिक स्पेस करेंगे तो इस पर इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मॉडल है इवोव पेवलोव, जो रशियन अपने साइंटिस्ट थे उनका, जो कि हमारी कंडीशनिंग थ्योरी है। और मैं बार बार ही बोलता हूँ, मार्केट में कंडीशनिंग बहुत होती है, मतलब इतने ज्यादा कंडीशन लोग हो जाते हैं एक चीज से कि बदलते हैं ही नहीं, है ना। जैसे एसजीएक्स निफ्टी का मैं बार बार ही बोलता हूँ कि मतलब इन्वेस्टर भी होएगा ना, वो भी सुबह उठ के ना एक बार एसजीएक्स निफ्टी को जरूर देखेगा, कहाँ पे बंद हुई कहाँ पे खुला। कई लोग तो हो सकता है कि डाउ को रात को बंद करा के फिर सोते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है कि यार डाउ अगर सही बंद होएगा तो सुबह मेरी पोजीशंस को ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है कई बार डाउ हो लेकिन आपको स्ट्रांग हो जाए सुबह, या मार्केट हमारा स्ट्रांग हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि डाउ स्ट्रांग होता है रात को बंद, लेकिन हमारा मार्केट वीक हो जाता है, लेकिन स्टिल वी हैव दैट काइंड ऑफ कंडीशनिंग इन आवर माइंड, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मतलब हम अपने अपने माइंड को ना कंडीशन कर लेते हैं, जो इवा पेवलन ने डॉग के साथ किया था, वही सेलिवा वाला एक्सपेरिमेंट और बेल बजाना, और वो मतलब रिपीटेड बिहेवियर कोई भी होता है, अपने को लगता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होता रहेगा। तो मार्केट में भी वैसे ही है, राइट। कि एक्सिस निफ्टी जब जब होता है ना ज्यादा टाइम पे, अगर एक्सिस निफ्टी वीक है तो मार्केट की वीक क्लोजिंग होगी या न्यूट्रल रहा इस तरीके से, तो अपने को माइंड में फीड हो जाता है वो चीजें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, आप इसको सर्च करिए, इवॉव पेवलोव का ये थ्योरी है। ये थ्योरी आपको मदद करेगा अननेसेसरी कंडीशनल नहीं बनाने में, राइट। मार्केट में आपको कंडीशनिंग नहीं करना है बीइंग अ ट्रेडर। मैं ये सब जो दो बात मॉडल बता रहा हूँ, ये ट्रेडर्स के लिए ज्यादा वैलिड है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, लेकिन ये आपको कंडीशनिंग होने में हेल्प नहीं करेगा। मतलब आपको आपको ये फोर्स नहीं करेगा कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि हाँ ऐसा होता आ रहा है और ऐसा होता रहेगा। और ऐसा अगर आप कंडीशन करके बैठ गए, तो कहीं ना कहीं मार्केट जब उसके एडवर्स में बिहेव करता है तो हमको परेशानी होती है, या कह सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, या हो सकता है कि हमारे को हम फंस जाते हैं पोजीशंस में। तो कंडीशन नहीं होना है मार्केट में, चेंज होता रहना आपको, कोई कंडीशन मतलब नथिंग इज परमानेंट। और मैं तो कहता हूँ एज एन इन्वेस्टर एज वेल, बट ट्रेडर्स के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा कि किसी चीज में अगर आप फंस गए हो या नहीं चल रहा है, तो आप उसको कंडीशन मत हो उसमें कि हाँ इसी में रहना है मेरे को। आप रिव्यू करो
कई बार ऐसा होता है कोई ट्रेड में आप हो और वो नहीं चल रहा है, राइट, और आपको लग गया यार ये नहीं चल रहा है, एक काम करता हूँ, ये कॉस्ट पे निकल रहा है, इसको निकाल के मैं वो ट्रेड लेता हूँ जो मोमेंटम में, तो वो आपको वो डिसीजन भी आपको कई बार लेना पड़ता है, राइट। राइट, तो वो तब ले पाओगे जब आप कंडीशंस में नहीं फंसोगे, नहीं यार जो मैंने सोच लिया वो फाइनल है, ये चीज है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और दूसरा है आपका क्यूबुलर रॉस चेंज कर्व। ये दो मॉडल्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा सब लोगों को। आप प्लीज इन मॉडल्स को स्टडी करिए यूट्यूब में, आपको गूगल में बहुत एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इन मॉडल्स का कि कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपके काम आ सकते हैं। ओवर टू विशु। Absolutely. Thank you so much for sharing that with us again, with us, sir. And ये so ये मॉडल सर से मैंने पहले एक बार सुने थे, and I have been an absolute fan of both of these. And thank you so much, sir, for sharing this with us. Next, sir, of course, I want to ask about your view on Nifty. अभी आने वाला market कैसा होने वाला है? But before I go there, I also want to talk about sir का portfolio, which has been doing magnificently well. It's very easy to find Sir's portfolio because it's always right there on the very top. आप हमारे explore section में, if you go to our explore section in our app, it's there at the top 3 portfolios में हमेशा रहता है. 88% returns रहे हैं since just April 20. So that is an important point to note because बहुत ही शॉर्ट स्पैन है, मतलब अप्रैल 20 से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं सर का पोर्टफोलियो, और इसी स्पैन में सर ने मतलब ऑलमोस्ट 90% रिटर्न्स बन जाते हैं, ये 88.79 ऑलमोस्ट डबल हो गया. सो एक साल भी नहीं है वो, दैट्स लेस देन 1 year. तो दैट्स एन एब्सोल्यूट ब्यूटी. एंड ऑफ कोर्स इफ वी टॉक अबाउट पास्ट फ्यू डेज, तो पिछले एक महीने में निफ्टी हैज बीन अप 5.38%. थोड़ा साइडवेज गया, नीचे गया, फिर वापस रिकवर किया. सर का पोर्टफोलियो इज अप 23%. लास्ट 1 वीक में निफ्टी इज 3%. इन आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 1 वीक. पिछले एक हफ्ते में अगर आपने एक हफ्ते पहले इन्वेस्ट किया होता, योर पोर्टफोलियो वुड हैव बीन अप 6.5%. Sir's portfolio is 3.10%, and I'm talking about Move with Momentum, जो सर का portfolio that I'm discussing right now. And I have personally invested in it. In fact, if you go to, and this is such an actively managed portfolio, if you go to my profile right now, Vishu Karthik, जो co-host की profile है, if you look at the second tweet from the top, वहीं पे ही आपको दिखेगा. आज आई पुट अ स्क्रीनशॉट इन द मॉर्निंग, वी हैड अ पॉडकास्ट, सर हैड वेरी ग्रेशियसली अग्रीड टू कम टू टॉक टू अस इवन दो ही वाज बिजी. इवन देन आपको दिखेगा एक नोटिफिकेशंस का दिखेगा, तो यू कैन सी कि कौन कौन से नोटिफिकेशंस मुझे आए हैं. सर का ये सर का ही पोर्टफोलियो है, मूव विद मोमेंटम बाय स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट, वो जो स्क्रीनशॉट है वहां पे. एंड उसमें यू कैन सी कि मेरे पास टीवी ब्रॉडकास्ट 18, रेडिंगटन, केएम शुगर, त्रिवेणी, ये सब सर ने आज लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में. And I bought them with sir. I all I had to do was press on execute, and I also bought these with sir. So that is the beauty of social trading. आपको सर जब भी कोई स्टॉक लेते हैं आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिज पोर्टफोलियो, फॉलोइंग हिज ट्रेड्स थ्रू ट्रिंकर, एंड आई हैव बीन अ वेरी हैप्पी कस्टमर फ्रॉम ट्रिंकर बिकॉज ऑफ सर्स पोर्टफोलियो. एब्सोल्यूट ब्रिलियंस है. तो आज के तो सर आई थिंक आपकी स्टॉक लिस्ट एक कुछ तो वो नोटिफिकेशन में भी दिख रही है कि कौन कौन से स्टॉक्स पे आप बुलिश हो. बट इन जनरल आई वुड लव टू हेयर अबाउट इट फ्रॉम यू एज वेल. So Vishu, as you know, कि I'm a thematic trader, right? In terms of trading and all. So thematic means we need to pick the themes, because whenever the market is in a bull run or market is moving up, तो वहां पे आपको 2-3 सेक्टर लीड करते हुए मिलेंगे हमेशा. वो कोई भी हो सकते हैं, है ना. तो आपको वही सेक्टर में ज्यादा बेट खेलना है, राइट. और वो सेक्टर्स में से आपको स्टॉक्स निकालना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो अच्छा मूव कर सकते हैं, राइट. तो मतलब ऑब्वियसली कोई ऐसा सेक्टर होएगा, लाइक अभी जैसे प्रेटी मच बुलिश ऑन दिस शुगर थीम. शुगर में मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग पिछले 3-4 क्वार्टर से. लेकिन अभी पिछले 2 क्वार्टर से जो ऑन ग्राउंड चीजें हुई हैं, आप उनको वैलिडेट करोगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब जानने को मिलेगा, राइट. तो मतलब वो एथेनॉल ब्लेंडिंग से बियॉन्ड है. अभी वो मतलब कहीं ना कहीं 1-2 दिन से ना मीडिया पे भी या टीवी पे भी डिस्कस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो एथेनॉल है उससे कॉमोडिटी. या हेलो. हाँ, यस विशु.
Yes, I can hear you, sir. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एथेनॉल जैसे अब शुगर है, तो शुगर में जो पूरा वैल्यू चेन में पूरा डिफरेंस आया है, तो टेक्निकली भी वो अच्छा कर रही है और फंडामेंटली भी अच्छा कर रही है। लेकिन 2-3 दिन से आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा कि काफी लोग बात कर रहे हैं कि एथेनॉल से कमोडिटी या कह सकते हो कि आप इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये भी डेवलप हो सकता है। तो एक नया वो दौर छिड़ गया है इसका पूरा। और एक कंपनी है साउथ का जो कि आईपीओ प्लान कर रही है और जो एथेनॉल से केमिकल्स बनाती है, राइट। तो अभी और मतलब लास्ट ईयर पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स के और इनके, तो उन्होंने भी बोला था कि एथेनॉल सिर्फ ये नहीं कि बायोफ्यूल के लिए काम आ जाएगा और उसमें ब्लेंडिंग के लिए काम आ जाएगा। एथेनॉल की प्रॉपर्टीज को अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो उससे आप केमिकल्स भी बना सकते हो अलग अलग टाइप के, राइट। तो वो सारा थीम छिड़ गया है और आगे अगर वो चीज मार्केट में आती है, उसकी भनक लगती है और कंपनी से उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं या करना चाहेंगी, जो भी है, कुछ ऐसा आता है, तो आपको पूरा सेक्टर का री रेटिंग ऑलरेडी हो गया है, लेकिन उससे बड़ा रेटिंग आपको मिलेगा। तो इस तरीके के ट्रिगर आपको ढूंढने पड़ेंगे फंडामेंटली। टेक्निकली तो कंफर्म हो जाता है अपने को, लेकिन फंडामेंटल ट्रिगर आपके हाथ में अगर है कि यार ये चीज हो सकती है, तो वहां पे सेक्टोरियल टेलविंड और ज्यादा बड़ा रहता है, राइट। तो ऐसे करके अपने कोशिश करते हैं कि मोमेंटम में अगर जाना है तो मोमेंटम मतलब आई जनरली फॉलो द लॉ, न्यूटन का जो पहला लॉ होता है ना, हम लोग ने पढ़ा था, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, राइट। कि कोई भी चीज अगर मोमेंटम में है तो वो मोमेंटम में रहेगी अनटिल अनलेस इट इज इम्पैक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। और कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, कंसोलिडेशन जो हम मार्केट में बोलते हैं, तो रेस्ट में रहेगी अनटिल अनलेस उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट ना आ जाए। तो मोमेंटम का मतलब ये है कि आप वो चीज लीजिए जहां पे मोमेंटम है या आने की संभावना बन रही है, राइट। तो और नहीं बने, आपने स्टॉक ले लिया और नहीं बने तो एग्जिट करिए और जहां बन रही है वहां उस चीज को लीजिए। तो इसमें अपने वो पोर्टफोलियो रखते हैं। बात रही स्टॉक मार्केट की वी हैड अ डिस्कशन इन द आफ्टरनून एज वेल। जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी का 250 के ऊपर सेटलमेंट होने का काफी ज्यादा चांसेस है और वो हुआ भी, राइट। समहाउ वहां तक निफ्टी गई भी और सारा कुछ हुआ। मेरा ख्याल ये है कि जो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है एनएससी का, एनएससी स्मॉल कैप 100 जो है, वो 30 से 40 पॉइंट आज रह गया अपने ऑल टाइम हिट को मतलब हिट करने के हिसाब से। शायद कल वो हिट करे उसको, अब देखिएगा। बीएससी वाला तो ऑलरेडी हिट कर चुका है और उसके बाद इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको स्मॉल कैप में और ज्यादा यूफोरिक मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सेशंस में। तो ये है। और बात रही निफ्टी की, निफ्टी मेरे को लग रहा है 350 जो एक स्विंग पॉइंट और है, वो एक छोटा सा बैरियर रह सकता है। अगर उसको निफ्टी निकालता है तो निफ्टी बहुत जल्दी उसके ऊपर क्लोज आता है या निकालता है, तो बहुत जल्दी आपको नया हाई जो है वो हिट करता हुआ दिखेगा, राइट, एक बार के लिए। और नया हिट करने के बाद हो सकता है छोटा मोटा करेक्शन उसमें आए, मतलब 200-300-400 पॉइंट का, या उससे पहले अगर नया हिट नहीं करता है निफ्टी, वहां से कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लेता है, तो भी मेरे को लगता है कि निफ्टी अब जल्दी से 18,100 या 18,000 या 18,100, ये 100 पॉइंट का बैंड जल्दी से तोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं। मतलब जिस तरीके से उसने आउटथ्रो किया है, कॉल सेलर्स जो वहां पे बहुत एक्टिव थे और पूरा जो पैटर्न चेंज किया है, जो लोअर लो का था और वो हायर हाई का बन गया है अभी। तो अगर 350 को तोड़ता है, एक और स्विंग पॉइंट है, तो ये पैटर्न और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई आता हुआ बहुत जल्दी दिखेगा, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। Absolutely. Great, sir. And thank you so much for sharing that with us, sir. And for our audience, actually, आज ही हम लोगों ने एक portfolio में I said this in the starting of this podcast. आज हम लोगों ने एक क्योंकि हमारा बर्थडे था, एक स्पेशल पोर्टफोलियो बनाया एंड वी अप्रोच 3 of our टॉप एक्सपर्ट्स और उनसे हमने पूछा कि दो दो स्टॉक्स हम लोगों ने पूछे कि सर आपको क्या लगता है आने वाले एक साल में कौन से स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो the link to that portfolio is actually pinned on our profile right now, Trinker की profile पे pinned है। You can check that portfolio out and if you invest with 3,000 or more in that portfolio you get 300 cashback as well, तो एक 10% returns तो तभी बन जाते हैं। But why I brought this up again is one of the experts that we asked for stocks was stock market scientist sir। उन्होंने दो stocks उस portfolio के भी दिए थे। तो सिंस वी हैव मार्केट साइंटिस्ट सर विद अस, मैं उन दोनों स्टॉक्स के बारे में भी इफ आई कैन हैव सम वर्ड्स अगेन सर। आज हमने दिन में पॉडकास्ट भी किया था, आई एम श्योर सम ऑफ यू वुड हैव बीन देयर इन द डे पॉडकास्ट एज वेल, बट फॉर दोज हु आर नॉट देयर आई वुड वांट टू आस्क सर
क्विक शॉर्ट नोट अगर उन स्टॉक्स पे हो जाए जो आपने नॉमिनेट किए थे इस पोर्टफोलियो के लिए। देखो विशु, दो स्टॉक से नो ब्रेनर भारती एयरटेल। तो आई गेस जैसे मैंने आफ्टरनून में भी बताया था और मेरा पूरा उस पर बिलीफ है कि अपना जिस तरीके से जियो ने पूरा लीड किया था 4G का रोल आउट, है ना, क्योंकि जियो के पास उससे पहले कोई बैकलॉग था नहीं, और भारती आइडिया और इन सब के पास बैकलॉग था 2G 3G का। तो ये लोग उसमें फंसे रहे और वो 4G को उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए जिस तरीके से जियो ने किया। लेकिन अभी चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, एंड आई गेस अभी आइडिया का न्यूज आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो जो 5G का रोल आउट होएगा उसमें भारती का बहुत बड़ा चांस है कि वो बहुत अच्छे तरीके से compete करेगा, बिकॉज दैट कंपनी इज एन ओल्डेस्ट प्लेयर इन दैट इंडस्ट्री। मतलब प्राइवेट प्लेयर की अगर मैं बात करूंगा तो जियो से बहुत पहले वो आ गई थी, मतलब एक दशक पहले आ गई थी, डिकेड अगो। और एक्सपीरियंस, प्रमोटर एक्सपीरियंस रहता है। तो आई एम श्योर कि जो पहले गलती होगी उनसे कि 4G को टाइम पे नहीं लाए या सब कुछ किया, वो गलती 5G के टाइम पे नहीं करेंगे। 5G जब आएगा तो आपको, आप देख लीजिएगा, मेरा विश्वास ये है कि एयरटेल जो है जियो को बहुत बड़ा कंपटीशन देगा। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि शेयर जो है उससे ज्यादा लेगा नहीं लेगा, अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा रहेगा। और कहीं ना कहीं करंट जो 4G का शेयर ये लोग ज्यादा नहीं ले पाए, शायद 5G में आपको ज्यादा देखते हुए मिलेंगे। और मेरा मानना ये है कि प्राइस पैटर्न भी उसको वैलिडेट कर रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में, एक साल के लिए नहीं, हालांकि वो हमने एक साल के लिए डिस्कस किया है, आने वाले एक साल के बाद भी आपको भारती एयरटेल बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली और टेक्निकली भी वो चीज कंफर्म हो चुकी है। मल्टी डिकेट या कह सकते हो बहुत मल्टी ईयर का ब्रेकआउट उसमें ऑलरेडी 600 650 बैंड को तोड़ने के बाद हुआ था। तो वो भी वैलिडेट हो गया है, वो सब सप्लाई जो था सब खत्म हो गया है वहां पे। अभी वहां पे डिमांड ही डिमांड आपको मिलेगा, एंड दिस शेयर विल बी ट्रेडिंग इन 4 डिजिट्स सूनर देन लेटर, आप बोल सकते हो 2022 में। ये चीज है। दूसरा शेयर था अपना JNFC, तो जो कि TDI में लीडर है। तो हमने बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो अपने अपने फील्ड में लीडर है उनको मल्टीबैगर बनते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में। लेकिन ये एकमात्र शेयर था जो कहीं ना कहीं एक PSU का टैग भी हो जाता है, वो भी चीज थी। और कॉमोडिटी में एक बेयर मार्केट था 18 के बाद से ही, उसकी वजह से उठ नहीं पाया था उतना। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से, खासकर TDI फ्रंट में, तो TDI का भी ये लगा लो एक बहुत बड़ा लीडर ये बन गया। 70% से ज्यादा मार्केट शेयर इसका है इंडिया में, TDI का। और TDI का एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो 6 से 7 इंडस्ट्रीज में है, ऑटो से लेकर आपका, मतलब बहुत इंडस्ट्रीज में इसका है, टेक्सटाइल में भी है। तो मतलब मेरे ख्याल से आप मानिए कि और आप इनके प्रेजेंटेशन को देखिए GNFC के, तो आपको लगेगा कि यार इतने बड़े कंपनीज को ये लोग सर्व कर रहे हैं, है ना। उससे प्लस 30% जो बिजनेस है वो इनका एग्रोकेमिकल्स में है इसमें। तो एग्रोकेमिकल्स भी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा कर रहा है। खासकर ये जो DAP का शॉर्टेज जब हुआ था, तो इन्हीं का कंपनी है, GSFC की पेरेंट कंपनी है। तो उसका एक DAP आता है सरदार नाम से, यूरिया प्लस DAP। तो इन लोगों ने एग्रोकेमिकल बहुत पुश किया। मैंने कई मार्केट्स में चैनल चेक भी किया और मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरा काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है एग्री थीम से। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा सेल किया है और बहुत नई टेरिटरीज में अपने आप को प्रेजेंट किया है या पेनिट्रेट किया है, बोल सकते हो। आने वाले टाइम पे उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो एग्रोकेमिकल प्लस TDI तो ऑलरेडी थी इनकी, दोनों ही अच्छे हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा चीप है, आप ये मान सकते हो। तो ये GNFC आपको, मेरे को लगता है कि साल में तो नहीं बोलूंगा, बट 2 या 2.5 साल में मैं बोल सकता हूँ शायद ये भी 4 डिजिट में आपको ट्रेड होता हुआ मिलेगा, ये शेयर भी। और काफी बड़ी कंपनी है और लीडर है मार्केट में, सबसे बड़ी चीज ये। तो ये दोनों शेयर मैंने शेयर किए थे, एंड आई एम प्रेटी मच बुलिश। एज ए डिस्क्लोजर मैं होल्ड भी करता हूँ दोनों शेयरों को। एब्सोल्युटली। भारती को मैंने एंड अभी स्टार्ट करना, बाय करना स्टार्ट किया। JNFC पुराना बाय है मेरा, ठीक है। okay, awesome. So Bharti is a favorite stock of mine as well, by the way, sir. मतलब मेरे को, I have been holding it since कुछ 530 के लेवल से, एंड पहले ही काफी साल बाद, वो 15 साल बाद इसने मूव करना शुरू किया था, तो तब मैंने होल्ड किया था। आई हैव अ मेंटर हु इज इन द ऑडियंस टुडे एज वेल, मानवेंद्र सर। एंड उन्होंने, उनकी कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं जो कि मेरे भी बन गए हैं, टाटा मोटर्स है, Airtel, and some of these two are the stocks that are my favorite, absolute favorite as well.
एंड भारतीय में एक चीज और है विशु, यहाँ पे प्रोमोटर जानते हैं कि हमने जो गलती किया पहले, है ना, गलती तो नहीं किया, मतलब वो मतलब डेट वाज द नीड ऑफ द आवर, या ये बोल सकते हो, वो लोग 2G 3G में फंसे रह गए और 4G का शेयर कोई और ही खा गया, राइट। राइट। बट मेरे को लगता नहीं कि जो एक्सपीरियंस प्रमोटर होता है वो एक बार ही गलती करके बार बार ही गलती करेगा। उनको पता था वो चलो ठीक है गलती हो गया, हम लोग उसमें फंसे रह गए, 4G का शेयर नहीं ले पाए, लेकिन 5G रोल आउट जिस दिन शेयर होना स्टार्ट होएगा, इवन 4G में इन लोगों ने अपना लॉस्ट मार्केट शेयर काफी कवर किया है, देखा जाए तो आज की डेट में बहुत सारे कस्टमर्स एक्वायर किए। इवन मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, आई वाज VI कस्टमर 2 years बैक, मतलब कोरोना से शायद 3 महीने पहले मैं VI कस्टमर था, राइट। और मैं उसके बाद भारती में कन्वर्ट हो गया, आज भी भारती का कस्टमर हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। तो काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और जियो से भी कन्वर्जन हुआ, ऐसी बात नहीं है। बट मेरे ख्याल से वो नंबर 1 और नंबर 2 का पोजीशन अगर जो रहेगा वो भारती और जियो का ही रहेगा आने वाले टाइम पे। और कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि 5G में ये लोग कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, जो इन्होंने राइट। 4G में कसर छोड़ दी, बिकॉज 5G के रोल आउट के लिए 4G के लिए शायद ये लोग तैयार नहीं थे, अचानक से एक बम आ गया पूरा ना। और दैट टाइम दे हैड दैट दोस हेडविंड्स ऑफ 2G एंड 3G एज वेल, है ना, कि भाई तुम्हारे पास तो 4G है सिर्फ, हम लोग तो 4G को संभालेंगे, 3G 2G का हमारा ड्यूज रह रहा है उसको भी पे करेंगे। बट 5G में ऐसा रहेगा नहीं, 5G में दे आर फुली प्रिपेयर्ड, और सारी चीजें सब क्लियर हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई है वो होती रहेंगी। और मतलब हर मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं लोग फाइट करेंगे, आप देख लो उसमें। एब्सोल्युटली। एंड सर एक फंडामेंटल शिफ्ट जो आया है ना, जो अब प्राइसेस, जो प्राइस और रिलायंस ने छेड़ी हुई थी वो कहीं अब खत्म सी इस समय फॉर नाउ, अनलेस रिलायंस स्टार्ट्स अनदर प्राइस वॉर। इस समय प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो ही हैं, एयरटेल एंड जियो। एयरटेल जो है वो प्रीमियम पे एयरटेल ब्लैक और उन सब के थ्रू फाइट कर रहा है, और जियो जो है वो मासेस को लो प्राइस कैटेगरी में दे रहा है। तो जो प्रीमियम सर्विस है और एक लो प्राइस है, दो ही हैं। एंड सिंस रिसेंटली अभी वो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं ओवरऑल, एंड तो कहीं ये भारती के लिए बहुत अच्छा है, और जो रिलायंस की ऑफरिंग है वो कहीं फीकी पड़ जाती है। तो अनलेस रिलायंस स्टार्ट्स अनदर प्राइस वॉर, आई थिंक दिस इज गोना बी एब्सोल्यूट धमाका। तो ब्रिलियंट पिक सर, आई मीन थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग दैट। मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट स्टॉक है वो। एंड मैंने आज उस आपका पोर्टफोलियो ये वाला जो हम लोगों ने बनाया, ये फॉलो भी आज ही किया। फॉर ऑडियंस हु हैव जस्ट जॉइंड अस, यू कैन चेक आउट माय प्रोफाइल, विशु कार्तिक का जो को होस्ट प्रोफाइल है, इसमें टॉप से थर्ड या फोर्थ ट्वीट आपको मिल जाएगा। उसमें आई हैव कैप्चर्ड अ लाइव वीडियो ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। आई had recorded my screen while investing in it. I invested 11,000 rupees in it, and you can see the video. उसमें पूरा सब कुछ दिख रहा है कि it's a 20-second short video, and उसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखेगा how to invest in that portfolio, and if you invest with more than 3,000 you get 300 cashback as well. मुझे ऑलरेडी मिल चुका है मेरा 300 कैशबैक ड्यूरिंग डे टाइम टुडे। वो आज ही पोर्टफोलियो बना था, and we had already had 36 people investing in it during the पॉडकास्ट इटसेल्फ। उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को आज का कैशबैक मेरी टीम ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि जा चुके हैं, एंड विद इन 24 आवर्स जो भी इन्वेस्ट करता है उसको कैशबैक जाता ही है। सो प्लीज डू चेक इट आउट। मार्केट साइंटिस्ट सर के भी स्टॉक्स हैं उसमें, और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। यू कैन चेक इट आउट, द लिंक इज पिन्ड ऑन आवर प्रोफाइल, ट्रिंकर की प्रोफाइल पे। आप जाके उस पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते बाकी हो। विशु, मैं JNFC के क्लाइंट आपको बता देता हूँ, TDI की अगर जी। मैं बात करूं तो TDI में एशियन पेंट और बर्जन उनके क्लाइंट है, आप देखिए। राइट। वाह। और जैसे मैंने बताया होम होम फर्निशिंग में उनका शेयर है, तो स्लीपवेल से लेकर कल ऑन हो, ये सब उनके, मतलब आप देखिए वो है पूरे। स्लीपवेल एब्सोल्युटली। मतलब उसका लिस्टेड शेयर भी है शीला फोम के नाम से, राइट। ये उनके क्लाइंट है, आप देखिए, एब्सोल्युटली। मतलब ये लीडिंग क्लाइंट्स हैं, और उससे भी ज्यादा है। मतलब एक टाइम पे तो अभी अभी तो 70% से ऊपर मार्केट शेयर है, एक टाइम पे 60 था। तो ये जितना बढ़ेगा, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है ना, वो भी अब ये मान लो China+1 प्ले यहाँ पे होएगा। जैसे दीपक नाइट्रेट में हमने प्ले किया कि फिनॉल का और इसका पूरा जो सारा था कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट था नहीं वहां पे। तो जितना ज्यादा इम्पोर्ट हम करते थे, वो सारा सारा धीरे धीरे इन लोगों ने अपना डोमेस्टिकली कन्वर्ट कर लिया सारा कुछ, ये चीज है। राइट। बाकी इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे एनएलआई है, वहां पे भी इनका 60% मार्केट शेयर है। तो उसमें RLG, आरती इंडस्ट्रीज, डीपॉन्ट, मतलब बड़े बड़े नौसिल, ये सब इनके कस्टमर्स हैं, आप देखिए, राइट। एब्सोल्युटली। हम मतलब आप मान के चलो कि जो बड़े बड़े लीडिंग प्लेयर हैं
मतलब अब यूरिया जो टेक्निकल ग्रेड का यूरिया बनाते हैं, अमूल इनका बहुत बड़ा कस्टमर है, आप देखिए राइट अमूल जैसा कंपनी। और जो एसिटिक एसिड है, हालांकि वहां पे इनका शेयर नहीं है, 15% के आसपास शेयर होगा, लेकिन रिलायंस, इंडियन ऑयल, ये सब इनके कस्टमर्स हैं वहां पे, राइट राइट। राइट तो कंपनी इज वेरी मच रिनाउंड, बट ये था कि उसको रेटिंग नहीं मिला था। और कोविड के बाद जो डायनेमिक्स बदला इस कंपनी के लिए, इवन काफी कंपनीज के लिए बदला है, वो मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट होएगा। और आपको शायद ये 1 साल में, अगर नहीं तो 2 साल में आपको 4 डिजिट में ट्रेड करता हुआ शेयर मिलेगा जीएनएफसी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट, सो दैट वाज अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच मार्केट साइंटिस्ट सर, ये हम लोग के साथ इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एंड मतलब मेरे को पर्सनली स्पीकिंग, मैं मार्केट साइंटिस्ट सर से अदरवाइज भी जब भी बात होती है तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट पर्सन सर, थैंक यू सो मच आप एसोसिएटेड हो। एंड ऑन अ उनसे बात करके लगता है कि वो सच में हमारे साथ ट्रिंकर के साथ सचमुच अंदर से चाहते हैं कि ट्रिंकर ग्रो करे। एंड ही सो मच associated, he's so concerned about Trinker कि ये होना चाहिए, he keeps giving us suggestions कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। And all of them of course amazing suggestions, and he's closely associated with our platform. So we can't thank you enough sir for all that you do for us, not only just hosting your portfolio but always being there for us. आपके इतने अच्छे feedbacks रहते हैं, we are here because of you. Thank you so much for always being there for us sir. Right. मोर देन ट्रिंकर, विश यू, माय विश इज टू, जो भी लोग जुड़े हैं ट्रिंकर के साथ, बाकी सब लोग वो भी और अच्छा ग्रो करें, राइट। और वो मतलब उनके लाइफ में भी अच्छा प्रॉस्पेरिटी आए, ये चीज है, ये चीज Right. है। एंड मतलब Absolutely. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉस्पेरिटी दैट, और दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस वी हैव, Right. राइट। Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for being there for us, and I really can't thank you enough. Right. So after market scientists, I want to talk to the next person I want to talk to is one of the very latest additions to Trinker family, and उनके साथ भी मैंने एक दो बार podcast पे बात करी है in a group of podcasts, but अभी तक हम लोग एक dedicated session नहीं कर पाए हैं, and that is Curious Shubham sir. And I am really looking forward to a dedicated session with एक one-on-one session जिसमें कि मैं जितनी बार भी मैंने क्यूरियस शुभम से सर से बात करी है, आई हैव ऑलवेज बीन अमेज्ड उनकी स्टॉक लिस्ट के बारे में, उनके जो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं अपने रैशनल अपने स्टॉक्स के, दिस दैट जस्ट ब्लोज माय माइंड अवे ऑलवेज। एंड आई कांट टेल, मतलब आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ सर से बात करने के लिए वन ऑन वन इन द कमिंग डेज। क्यूरियस शुभम सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी सो फार ट्रिंकर के साथ कैसी रही। यस, थैंक यू विशु। सो सबसे पहले तो ट्रिंकर को हैप्पी बर्थडे, क्योंकि थैंक यू 1 ईयर सर। कंप्लीट हुआ है। तो और ये जो ट्रिंकर का जो ऐप आपने लाया है, जो जो सर्विस है, तो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज अ रेवोल्यूशनरी सर्विस यू हैव स्टार्टेड, because if you see in whole industry, I don't see any other competitor or any other this kind of app existing in the system, because यहाँ पर we are able to execute our trades live, and that is what live data, live percentage, everything which is also compared with Nifty, and everything is transparent, and everything is like people can directly see, and this is truly a social trading platform. So this is like quite amazing. This particular Trinker app is, and yeah, so there are also improvements I am seeing with every new update, and that is also like great things. And even if I feel anything need to be updated in the app, or any change need to be done, that is also done very quickly. And if there is any issue, that is also getting fixed on like timely manner. So that is like a wonderful platform, and I would like to wish you all the best for next coming years. And yeah, that's it. राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। नेक्स्ट सर एक और मेरे को आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप एक वन ऑन वन शो करने हमारे साथ जरूर आओगे हमारे पॉडकास्ट पे, मेरे को और बहुत कुछ जानना है आपसे, बहुत कुछ सीखना है। Yes, yes, definitely.
definitely we'll have that session. All right, awesome, sir. So, sir, of course, next I want to ask you about your views on Nifty, the overall market key direction, and some stocks that are there on your watch list right now. Yeah, definitely. So, as we had discussed in last week, Nifty has crossed 18,000, and it has crossed actually 18,200 level. So, it is a massive move, we can say, in this particular week. And with that, there is one concern I'm having for the Nifty, that it has just rallying, like it is rallying with green candles only, and there is no short deep or anything like that, and that is why I'm expecting a dip in the Nifty to continue this rally in upward movement, and I guess this rally will continue till budget. And as we are seeing, Omicron cases are increasing, but that is not a thing for concern in the market right now, as the situation is kind of under control, and market has already reacted for Omicron earlier in December. So I don't think there is any higher chance to react for Omicron again. So I don't see any big correction or crash, but what I see is a short dip in the market to continue this healthy bull run, and that is what I'm expecting in coming week. And if that comes, then we can expect that before budget or around budget, we can see new high in Nifty. Absolutely. Great, sir. Thank you so much for that analysis. And next, of course, आपका सर मैं कुछ वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं थोड़ा उनके बारे में जानना चाहूंगा. Yes. So, in my watch list, first stock is CDSL, which is personally my favorite stock, and it is in my portfolio. And currently, it is available at very good levels for trading. So, my first choice will be CDSL. So, it has given a breakout, and it was trading below 1600 level for quite a few sessions, and this today it has broken that level, and also volume is good to support that breakout, and we can see RSI is also above 60, and other factors are also good, like moving averages and everything looks everything looks fantastic, and I think this is a good trading setup for next week, and this particular stock can show a good up move in coming time. And if you are thinking about investing in this stock, then I think this is also good time, and this stock can show you definitely good rally in coming a few years, because what we are currently seeing is uh, in market we are seeing many new fresh participants are coming in market, and the most benefit of this particular thing will be to CDSL only. So I think this particular stock will should be there in the portfolio. It is a portfolio stock, and it will definitely perform good in longer run, and for short term also it will perform good in next week. Absolutely. सर इनफैक्ट CDSL के साथ मेरी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है. आई बॉट इट समवेयर अराउंड 1700, फिर वो बीच में 1800 गया. मैं बहुत खुश हुआ कि बड़ा मजा आएगा, एंड देन फिर वो नीचे आ गया. तो मैंने Yeah, फाइनली yeah. उसको तब जितने पे लिया था उतने पे ही निकाल दिया. तो इसको सर ऑफ कोर्स क्यूरियस शुभम सर का ट्रिंकर पोर्टफोलियो भी है सर. आई वांट दैट स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो. मेरे को अब की बार वो नहीं करना है. आई हैव इन्वेस्टेड इन योर पोर्टफोलियो ऑलरेडी. आप उसमें ऐड करो. आई विल फॉलो यू. Yes, yes, आई yes, yes. विल I'll मेक add. श्योर टू बुक प्रॉफिट्स व्हेनेवर यू बुक प्रॉफिट्स दिस टाइम. Yes, yes. Actually, what happened, I added this stock a long way before, and then I did not add it in Trinker portfolio. So that is why it is missing in my portfolio. Actually, so many stocks are missing in my Trinker portfolio because I had added them long time ago. So yeah, that is the one thing, like Tata Motors, Tata Power, or KPIT, you can say. So एब्सोल्युटली. yeah, एब्सोल्युटली. नहीं बट सीरियसली सर वो तो मतलब है ही. एक पोजीशन आप ले लेते हो तो उसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू. बट yes, इनफैक्ट फॉर ऑडियंस, क्यूरियस शुभम का सर का पोर्टफोलियो इज वन ऑफ द मोस्ट अप एंड कमिंग पोर्टफोलियोज ऑन अ प्लेटफॉर्म, जो रॉकेट स्पीड से अभी, क्योंकि वी हैव नॉट बीन ट्रैकिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग, तो ये टॉप पोर्टफोलियोज जो पहले से बने हुए हैं उनमें तो नहीं आता. बट देन इफ यू सर्च फॉर हिज पोर्टफोलियो, तो उसमें ऑलरेडी बहुत बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं.
and you must check it out. It is a brilliant portfolio. Thank you so much, Curious Shubham sir, हमारे साथ जुड़ने के लिए. I am an absolute fan of yours and I'm looking forward to that one special podcast with you. Yes, Please yes, yes, surely. do make time for it, sir. Yeah, yeah. Right. So I'll tell my second stock. Yes, sir. Yeah, so my second stock is Polycab. So Hmm. as we have seen today, it has given a massive breakout with like huge volumes, and it has broken its previous high, and it is successfully closed at the new high, and that is why I'm expecting huge rally from this stock, because it has been in a consolidation phase from since I guess from November. It is in consolidation phase, and now it has broken that phase, consolidation phase, and now we can expect at least 30 to 40% rally from this stock from current level. Hello. Right. So I think there's some technical glitch from Twitter's side. We're really sorry for the interruption, but Twitter keeps doing this to us. We'll try to fix this as soon as we can, of course. Meanwhile, I'm sure Curious Shubham sir will join us back again very soon. Meanwhile, Sagar Solanki sir is also there with us, Charts Insiders. And hi, are you there? Yeah, I'm audible. Yes, you are. Right. So, just one. Sagar sir is also there, but Curious Shubham sir is back. Sir, can I hold you for just 1 more minute? Sir, ka bhi almost वही था. So we'll not lose that chain of thought. Yep. Curious Shubham sir, are you there with us Yes, now? yes. All right. Awesome, sir. Please continue, Yeah, sir. when did I cut? Because I don't know. I was speaking it, and It's later I saw the screen and it was blank. बिल्कुल towards the very moment, sir. You have immediately joined back, so not long ओके ago. ओके ऑलराइट. सो देखो, इस स्टॉक ने भी काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, और आने वाले वीक में आई गेस इट इज अ गुड सेटअप फॉर ट्रेडिंग. आई थिंक बैक टेस्टिंग हो सकती है यहाँ पर, बट अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज क्वाइट गुड फॉर दिस स्टॉक, and it can be a good trading stock for coming week. Right. Coming to my choice. Absolutely. Yeah, Yeah. so third choice is very interesting. It is Tata Communication, and I have been bullish on this stock from quite a long time now, and I have added this stock in current market correction also at 1200 level, and now this stock has broken its high, and it is successfully given a good breakout and also retesting, and now this stock is like perfectly ready for the rally, and it has been in consolidation zone from I guess from June or July. The stock is in consolidation zone, and volumes were also low. But now we can see from previous 5 to 6 sessions, there are volumes are increasing, and with those volumes, this stock has given good breakout, and the whole trading setup is perfect for me, and I'm actually bullish for this stock in coming weeks, and this may also give good returns, because this consolidation zone was a good base build for this particular stock, and fundamentally also this stock is like quite a good stock. People were running after TTML, and as we have seen after the news of that government, the TTML fall, the TTM is continuously in lower circuit, and this stock has given like 5 to 6% upper move, and it has broken its previous high. So this is one of the learning for retail investors, that do not run behind the penny stocks just because it is increasing, because currently it is increasing, but at some point of time it will decrease, and it will show you lower circuit, and I don't think then you will get any option to exit those stocks. So it's better to stick to the fundamentals, and if you want telecom sector stock and Tata Group, so I guess Tata Communications is a good stock. Absolutely. And sir, of course, तीन आपकी picks हैं. सबसे hot favorite कौन सी Yeah, रहेगी? सबसे hot and favorite will be CDSL, of course. Yeah. All right. Awesome, awesome. And sir, वो
I want that CDSL in your portfolio because मुझे उसे follow करना है अब की बार आपके साथ profits book Yes, करने yes, definitely. We'll add it. All right, awesome, awesome. Thank you so much, Curious Shubham sir. I hope आपका portfolio rocks on Trinker. I want to see it in the top performing portfolios very soon, and I will be investing personally in it. And thank you so much for being here with us. We won't be anywhere without you, sir. Thank you so Yes, much. yes. Thank you. All right. राइट सो नेक्स्ट हमारे साथ सागर सोलंकी सर हैं एंड सो आई से सर बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ हिज आर्ट बट ही इज एक्चुअली वे 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 यंगर हमारा इनफैक्ट द वेरी सेकेंड पॉडकास्ट दैट वी डिड मंथ्स बैक हमारा पहला पॉडकास्ट वाज विद दविंदर सर Davinder Khurana sir, and second podcast was with Charts Insider Sagar Solanki, and he मेरे को अभी भी याद है the title of that episode was Young Gun of Dalal Street because he's so young and so successful, and I'm always whenever I'm talking to him I mean I'm amazed कि इतना ज़्यादा talent, इतनी अच्छी knowledge इतनी young age में कैसे किसी में हो सकती है, and of course that in itself speaks so much about him. I also remember कि that was the second podcast a few months back, एंड उस समय सागर के कुछ 5,000 के अराउंड फॉलोअर्स थे, एंड इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड इट हिज नंबर ऑफ फैंस इज मोर देन डबल्ड. तो मतलब एवरी 6 months फैंस डबल हो जाते हैं इनके, एंड दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ हिज नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस जो भी आप कहना चाहो, बट I'm an absolute fan. Thank you so much, Sagar, हमारे platform पे आने के लिए and for being there for us. Another very beautiful thing about Sagar is he is probably the most straightforward person I know. जो बात है सीधी बात, no बकवास is the अगर कोई caption हो, कोई title हो सागर के लिए तो वो यही बनेगा, सीधी बात no बकवास. An honest person who always speaks from the heart and is an absolute master of stock markets. The young gun of Dalal Street is here with us. सागर, कैन आई हैव सम वर्ड्स फ्रॉम यू एज वेल? आपका एक्सपीरियंस अभी तक जर्नी कैसी रही ट्रिंकर के साथ? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन विष्णु सर. एंड मुझे याद है स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग से ही मैं आपके साथ में हूँ. एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. आपके टीम्स ने बहुत हेल्प किया. जो मेरे को डाउट आते तो मैं फर्स्ट चंद्रा से एंड देन सेकंड आपको ही पिंक करता था, इफ़ यू रिमेंबर दैट. सो एब्सोल्युटली. या बट एक्चुअली ऑन ट्रिंकर मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक किया पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया, बिकॉज पर्सनली मैं अपने मेन पोर्टफोलियोज में भी नहीं ज़्यादा चेंजेस कर रहा था. जो ऑलरेडी थे तो मैं उनको ही होल्ड कर रहा था. तो दैट्स वाई ऑन अगर आप ट्रिंकर पे देखोगे तो ज़्यादा स्टॉक्स मैंने कुछ लिए नहीं है. एक पोर्टफोलियो है जो 3-4 स्टॉक ले रखे हैं, बट अभी एक मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाला हूँ ऑन ट्रिंकर. सो वो पोर्टफोलियो आई गेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स विद फंडामेंटल पर्सपेक्टिव्स के साथ में कुछ अच्छे स्टॉक्स आने वाले हैं. सो ये फर्स्ट एक न्यूज़ था जो मुझे आपको देना था. एंड ट्रिंकर बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है. ट्रिंकर से मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बात हुआ था ऑन मैसेज पे, एंड उसके बाद चंद्रा से बात हुआ था. एंड देन मेरे को जो कॉन्सेप्ट उनका समझ आया, एंड देन कॉन्सेप्ट इज फैंटास्टिक. बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ पे वर्क करना लग गए थे उस टाइम पे, नवंबर राइट, कि राइट. बहुत सारे लोग इस चीज़ों पे बहुत कर रहे थे. बट सम पीपल आर डूइंग फेक चीज़ें, सम पीपल आर डूइंग अदर थिंग्स जिससे कि उनका बेनिफिट हो, राइट. दे आर कि हमारा ही बेनिफिट हो. एंड बैंगलोर बहुत सारी कंपनीज, जैसे मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए थे. बट आई टॉक विद चंद्रा सर एंड मानिंदर सर. उस टाइम मीट हुई थी, उस टाइम करीबन ट्रिंकर में 4-5 लोग थे तब राइट. मेरी बात मीट पे. एंड उसके बाद से जो जर्नी स्टार्ट हुआ, इट्स फैंटास्टिक जर्नी. बहुत राइट. अच्छा लगता है आपके साथ बात करके. एंड लाइक मैं तो डायरेक्टली ब्रदर की तरह ही बात करता हूँ, आपको पता ही है, हमेशा ऑलवेज. बिल्कुल. या तो कभी भी डाउट एब्सोल्युटली. होता है कॉल यू कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ रहेगा. Like, आज भी मैंने कॉल किया था सडनली. Right. Right, right. And नहीं, I'm always it's always in a pleasure to talk to you. And मतलब हम लोगों की बातें हर जगह से हर जगह रहती हैं कि right from so I'll release some inside scoop as well tonight कि मतलब you are a gym freak and क्या क्या चलता है. So और भी बहुत कुछ होती है, and it's always a pleasure talking to you. Right. Next, of course, coming to the theme tonight, market की बात with Trinker experts. तो market की बात पे पूछता हूँ कि आपका of course एक तो जो आपका portfolio आने वाला है, I'll be waiting for it. हमने आज शाम को भी बात की थी कि 10 to 12 stocks होने वाले हैं उसमें, and I'll be waiting for it, बिल्कुल ऐसे देख के.
please do let me know as soon as it's launched. I'll make sure that I'm the first one to invest in it. And of course, we'll release that on our Twitter profile as well. Keep lookout for that. नेक्स्ट मैं आपसे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी ओपिनियन है. एज पर मी निफ्टी मेरे को एज पर मी अभी भी मेरे को बुलिश लगता है, बट एक बार कहीं ना कहीं 18,600 के आसपास में थोड़ा सा आपको करेक्शन दिख सकता है, माइनर से करेक्शन. आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा. इफ यू चेक द वीकली चार्ट, उसमें जो डाउन ट्रेंड का चैनल बन रहा था उसने ब्रेकआउट कर चुका है उसके बाद. एंड ऑल्सो ये बजट के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ. मैं लास्ट जितनी बार भी मेरी बात हुई मैंने आप सबको ये बोला है कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, उसके बाद जनवरी के थोड़े एंडिंग के बाद से वापस बजट रैली स्टार्ट हो जाएगी और आप देखोगे स्टॉक्स के अंदर में ब्रेकआउट्स और ये सारी रैली स्टार्ट हो जाएगी. आई एम बुलिश ऑन द शुगर सेक्टर. बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बार मेरी बात हुई है, मैं रेणुका, अवध शुगर, द्वारका, अगर आज आज भी आप उठा के देखोगे तो अवध शुगर ने ब्रेकआउट दिया हुआ है. आई ऑल्सो शेयर द चार्ट. मैं जो आज जो स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ ऑलरेडी मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर मैं चार्ट्स डाले हुए हैं. इफ किसी को चार्ट्स देखना है तो यू कैन चेक. अवध शुगर, अनूप इंडस्ट्री, रेन इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग गुड. रेन ने भी मल्टी ब्रेकआउट के नियर पास में ही है. सो आप वो देख सकते हो. पॉलीकैब ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें लॉन्ग बिल्डअप हुए. इफ यू आर अ फ्यूचर प्लेयर देन यू कैन. अगर मैं सेक्टर के हिसाब से बात करूँ तो एफएमसीजी के अंदर में मेरे को ऐसा लगता है कि पुल बैक जो आ रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छी रैली दे सकते हैं. मेटल्स सेक्टर लुकिंग गुड अभी बिकॉज ऑफ द न्यूज़. एंड अगर आप उसका स्पॉट का चार्ट देखोगे सीएनएक्स मेटल्स का तो इट्स लुकिंग गुड. एंड शुगर एंड एनर्जी सेक्टर्स भी बहुत अच्छा है जिसके अंदर में बहुत सारे स्टॉक है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहे हैं. और जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में मैं ऐड करने वाला हूँ सूनर और लेटर, जो मैं शेयर करने वाला हूँ ट्रिंकर के साथ में, आई गेस 1 या 2 वीक के अंदर में आई विल ऐड द पोर्टफोलियो इन ट्रिंकर. राइट, तो एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक हम लोग की शाम को एक और स्टॉक के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ जो शाम को भी आपने मेरे को सजेस्ट किया था. आई वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, दैट इज द्वारिकेश. या द्वारिकेश के अंदर में मैं आज ही एंटर हुआ हूँ अगेन वापस क्वांटिटीज के साथ में. एंड धीरे धीरे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है. इफ आपको मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स अगर मैं बताऊँ तो रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो 85-80 रुपीज का उसका 2018 का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था. 2018-2017 से उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया. उसके बाद से वो डाउन ट्रेंड के अंदर में टाइम पास कर रहा था. आफ्टर दैट कोविड के अंदर वो 14 रुपए से लेके 8-10 रुपए का लो बनाया और उसके बाद से वो सडन हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है ना. अब ट्रेंड में आ गया था आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ 37 रुपीज. उसके बाद वो स्ट्रेटली विथ वॉल्यूम्स जाने लगा स्टार्टिंग से अप. एंड उसके बाद कंसोलिडेट किया उसने एक फेज के अंदर में कम से कम 7 से 8 मंथ का कंसोलिडेशन है उसमें, जून 2021 से लेके अभी तक के लिए. तो लास्ट 2 वीक पहले उसने ब्रेकआउट दिया उस लेवल को 80 रुपीज के आसपास का. एंड उसके बाद वो अभी 94 है. ज़्यादा कुछ अप नहीं है. तो अभी बहुत यंग, जैसे प्रवीण सर बोलते हैं कैच बिफोर यंग, राइट. सो अभी बहुत यंग है और ये यहाँ से डबल होने का पूरा मेरे को लगता है कि ये डबल हो जाएगा इन अपकमिंग 2-3-4 मंथ्स के अंदर में. एंड शुगर रिलेटेड है तो शुगर में मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ. मेरे को ये लगता है बजट के अंदर शुगर के अंदर में कुछ होने वाला है. एंड ऑल्सो विंटर चल रहा है तो विंटर में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट भी दिखेगा इस क्वार्टर के अंदर में शुगर से रिलेटेड जितने भी हैं. तो ये दोनों चीज़ें हैं. तो एज पर द चार्ट एंड द टेक्निकल एंड द फंडामेंटल्स एंड बजट के अंदर मेरे को पर्सनली लगता है कि कुछ आने वाला है शुगर के लिए एज पर द चार्ट के पे. सो आई एम बुलिश. और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो लुकिंग गुड एज पर मी चार्ट के हिसाब से. तो कहीं ना कहीं चार्ट्स पहले ही बता देते कि बजट में क्या होने वाला है. सो आई एम ट्रैकिंग लॉट ऑफ स्टॉक्स एज ऑफ नाउ. तो 10-12 मेरे स्टॉक लिस्ट के अंदर में एंड आई विल ऐड सूनर और लेटर इन पोर्टफोलियोज. तो वो ट्रिंक करके साथ शेयर करूंगा इन अपकमिंग वीक्स. सो या एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो योर पोर्टफोलियो. जो जैसे ही आएगा आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन इट. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट. प्लीज डू लेट मी नो एज सून एज इट्स लॉन्च. एंड ऑफ कोर्स एक सेशन और हमारा बाकी है, एक 1-on-1 और बहुत जल्दी करेंगे हम लोग. एंड सेकेंड एवर एपिसोड था, उसी का ही दोबारा मजा आएगा, बातें करेंगे खुल के. तो आई मीन आई विल बी वेटिंग फॉर इट. sure. I am audible, Vishnu? Hello. Yes, hello, you are. Okay. Yeah. Right. I am also waiting वो पॉडकास्ट के लिए. So I am ready जब करना. All right.
Yeah. Awesome. Awesome. All right. Thank you so much for that. Once again, the people who have just joined us, it's Trinker's birthday. What we are doing tonight is we are the main idea behind this podcast is to express our gratitude towards some of the experts who have been there with us in this journey. And we won't be here without these experts. इन्होंने हमें guide किया है, इन्होंने अपने portfolios open up कर दिए हैं हमारे लिए. And of course, wherever we are here because of them. So it's this the main aim of this podcast is to thank them, and of course market की बातें तो करेंगे ही. तो उसमें हम लोग market में उनका भी current market पे view भी पूछ रहे हैं, and we are also asking for some of the stocks that are there in their watch list. And besides that, to celebrate this birthday, what we are doing is we are giving away 300 rupees cash back on a portfolio. The link to that portfolio is pinned on our profile. The same link will help you download the app as well if you don't have the app yet. And once you have the app, the same link will take you to that portfolio जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. If you invest with 3000 plus rupees, you get 300 rupees का cash back. तो एक immediate 10% returns भी बनते हैं. And this portfolio has been curated by some of our top experts, and do check it out even if for curiosity's sake. I myself had invested it in this morning itself. You can live I had invested in it, and I recorded a video while investing. You can find that video pinned, not pinned, but it's second or third tweet on my personal profile, the Vishu Karthik co-host profile that you see here. Uspe, if you go and check out the third or fourth tweet, you'll find a video of me investing in that portfolio. And you can do the same. It's going to be a brilliant portfolio. The horizon for this portfolio is around about 1 year. And I promise that 1 year from today, we'll hold a podcast and we'll check out the returns that this portfolio has generated and it has given me as well. दोनों हम लोग live में share करेंगे, discuss करेंगे. आप लोग भी करिए. This was launched today itself, and already 36 people invested in it. In the morning itself, you can place an aftermarket order right now with Zerodha through our app, and otherwise you can invest in the tomorrow morning as well. And within 24 hours, you'll get your cash back as well. और जो returns आने हैं, that तो है ही है. Right. So next, I want to talk to another great trader that we have with us, Trendonomics sir, and he has been there with us again from the very beginning. I think हमारा fourth or fifth podcast था जब मैंने पहली बार सर से बात की थी. Sir, of course, he is a master of technicals in all the ways, but सबसे ज़्यादा famous वो हो गए हैं इलियट वेव्स के लिए. कुछ दिन पहले मेरी बात भी चल रही थी सर से कि मतलब ही इज एन एब्सोल्यूट मास्टर इन एवरीथिंग. बट जैसे होता है ना कि अमिताभ बच्चन इज गुड इन एवरीथिंग, बट उनकी आवाज के लिए ही सबसे ज्यादा वो फेमस है. तो वैसे ही टेंडोनॉमिक्स हर्ष दीक्षित सर जो है वो एलियट वेव्स के लिए फेमस हो गए हैं. एंड हिज कॉल्स हैव बीन स्पॉट ऑन. उन्होंने काफी बहुत ही स्पॉट ऑन कॉल्स दी थी अभी पिछले कुछ टाइम में हम लोगों के क्लब में. एंड मार्केट कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कब क्या होगा, ऑल हिज कॉल्स हैव बीन स्पॉट ऑन. So I am an absolute fan, sir. Thank you so much for being with us and regularly sharing such wealth of information with us. Sir, I would love to know how has your journey been with Trinker so far. थैंक यू विशु, थैंक यू. यार कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी तुमने. सर जो बोला है वो बिल्कुल सच बोला है. इसमें आप मेरे को बता दो एक भी चीज मैंने अगर झूठ बोली हो तो. सी आई मीन देयर विल बी टाइम्स के आपका बहुत सारी चीजें राइट जाएंगी, तो प्रोबेबली दिस वाज द टाइम मेरे बहुत सारी चीजें राइट गई. सो बट दैट डज नॉट मीन कि इतनी तारीफ बहुत ज्यादा हो गई है. नहीं सर बिल्कुल. दैट्स योर So ह्यूमिलिटी सर. yeah, like really very thank you, and first of all congratulations and very happy birthday. Yes. So Thank you. basically, see, I am on Trinker, but you won't find my portfolio because I mostly trade in FNO stocks. Or yes, I do prepare portfolios, but I'm like the person who prepares portfolio only based on see if I see 300 400% return. So that's why I did not create a portfolio, because I mean that was not possible right now. So I will be creating a portfolio somewhere down the line, maybe 4 5 months down the line. I hope so. I will get chance to create the portfolio for 300 400% returns. Till then, I'm trading FNO stocks, so that's why you may not find portfolio. But yes, right now also we have some opportunities, 30 40%, and I had posted them tagging Trinker. So probably you might have already got some of them. If you missed, you can definitely check on my profile.
And I have also done one video also how to pick the stock. So I will share on Trinker's pin tweet. Okay, then first of all, you are doing a great job, Vishu. You know, I mean, hosting all of the portfolios with the experts and like sharing them live with the audience because like people need some assistance, people need some kind of knowledge, and they are definitely a lot of people fail in markets because of the inadequate knowledge or inadequate risk management. But here, the experts are creating portfolios, and you know which stocks they are buying, which stocks they are selling. So definitely, you can take informed decisions, well-informed decisions based on the experts. So definitely, that's a great service you are doing, and thank you for doing this service, and congratulations. थैंक यू सो मच फॉर दोज काइंड वर्ड्स सर आई मीन हम लोग जो भी कर रहे हैं सब आपसे इंस्पायर होकर ही कर रहे हैं द आइडिया बिहाइंड कमिंग अप विद ट्रिंकर वाज सो ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर सोशल ट्रेडिंग इज अ बिग कॉन्सेप्ट इंडिया में वी वांट टू ब्रिंग दिस ट्रांसपेरेंसी दिस पोर्टफोलियो अप्रोच दिस एलोकेशन लोगों को पता चले एंड यू नो दे कैन फॉलो कॉल्स मोर प्रॉपर्ली तो ये सब तो करना ही है बट एक सेल्फिश रीजन ये भी है कि वी कैन डू दैट ऑफ कोर्स वी फॉलो हमारे जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो हमारे साथ आज पॉडकास्ट पे भी हैं दे हैव देयर पोर्टफोलियोज we personally all of us our entire team follows your portfolios and I think most of our team whatever so we track our markets of course but most of us have invested in almost all the portfolios that are available on Trinker and that is because we really believe in these you know this concept and in the stock market experts that are there with us. We have seen their journey, we have seen their verified returns, we have seen the kind of portfolios that they have created and how they have performed. And I can't express. So this when like I may seem like to be promoting Trinker, but I am just an advocate of Trinker because I really believe in this concept. तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मेरे को ऐसे of course I have a job here and I get paid for this but then outside this as well I'm just as excited about Trinker because this is something that is being done for the first time in India and this is such a novel concept मतलब uh, I am still new to markets and I find this amazing कि जैसे मैं काफी सालों से बाहर था because I didn't know where to get started and now I have something and I really believe in it and I really am really passionate about it कि कितना अच्छा ये कर सकता है प्लीज डू फॉर एवरीबडी हुज देयर इन द ऑडियंस टुनाइट प्लीज डू एटलीस्ट ट्राई इट आउट वंस यार एक दो पिज्जा कम खा लेंगे एंड स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यू कैन आल्सो स्टार्ट विद अ फ्री डेमो पोर्टफोलियो व्हिच वी हैव you'll find it in the links I'll also tweet its link just now बट प्लीज डू ट्राई इट आउट आप एक बार उसमें करके देखो ट्राई करके देखो हाउ अमेजिंग दैट फील्स कि आपको नोटिफिकेशन आता है and you can just in one tap you can take the same trades you can book profits when the trader books profit and it's very hassle free it's very easy the stocks stay in your brokerage account absolutely no charges for these things so if you're at all enthusiastic about stock markets please do try it out right so Trendonomics sir of course next मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि what is your view on the stock market in the coming days and what are the stocks that are in your watch list in the coming days ओके सो अगर निफ्टी की बात हम लोग कर रहे हैं तो एंड सिंस यू मेंशन अबाउट इलियट वेव्स so we are in such a euphoric phase right now where the market can continue to go up and up and people will keep waiting for the dips. The dip may come but just for 1 day 2 days 300 400 points and then market continues up. That kind of a phase we are right now, a euphoric rally. And currently I'm seeing 18,500 to 600, and maybe from there we can get some dip if we get it. We got one last week. Yes, the thing is currently क्या हो रहा है कि आवरली पे आरएसआई निफ्टी का अगर देखता हूं मैं तो लग रहा है कि ओवरबॉट है तो अभी नीचे आएगा मार्केट. बट हो क्या रहा है, मार्केट गोज साइडवेज, मार्केट कीप्स गोइंग साइडवेज, और अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो आरएसआई नीचे आता है. The job of like sideways market, RSI will come down, then it will give strength to bulls again to go up higher. तो करेक्शन आता ही नहीं है, करेक्शन आता ही नहीं है, डिप आता नहीं है, साइडवेज मार्केट जा रहा है और आरएसआई नीचे आ रहा है और वो बुल को स्ट्रेंथ दे रहा है कि और ऊपर लेके जाए. Right now that's happening. So yes, definitely there will be some dips. So जैसे लास्ट वीक एक डिप आया था 300 पॉइंट का, 2 बार आया था और I guess. And if you miss that dip, then definitely you will be waiting for the next one.
and Yeah. unless that dips comes, probably you will be just waiting. uh, Right. सो ऐसे डिप्स आएंगे बीच बीच में, एक दो दिन बीच में ही ऐसे झटके आ सकते हैं। लास्ट वीक में मैंने बोला था कि एक झटका आ सकता है बाहर निकालने के लिए, वो Hmm. झटके में ले लो, वापस ऊपर में आएगा। सो आई थिंक Right. 18,600 इज द लेवल, मे बी फ्रॉम वेयर वी may find a sudden shock, maybe 300 point dip, 300 400 points dip, but that dip should be used to buy again. uh, Right. and yes, definitely. Right now, we are in a phase that every day you will find some or the other stock breaking out of consolidation zone, or rather concentrate on stock specific moves, because there will be stock. अभी तो ऐसा हो रहा है कि मुझे हर रोज एक नया स्टॉक मिल रहा है, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि यार अभी मेरा करंट स्टॉक पोजीशन निकालूं, क्योंकि डेफिनेटली आई कैन नॉट मैनेज मेनी पोजीशंस एट अ टाइम, राइट? तो ऐसे हो रहा है कि अभी मैं क्या करूं, कि नया स्टॉक ले लूं कि करंट पोजीशंस के साथ होल्ड करूं। Right. ऐसे, हाँ, so we are getting a lot of stock, and I had posted a couple of opportunities also last week. Hindalco, Tata Chemicals I'm holding, Tata's Motors is there, I'm holding, and I had posted also tracking Trinker, Hmm. and Reliance I'm bullish on, uh, and of course definitely Bharti, जो 15 साल का breakout आया है, so definitely I'm very bullish on Bharti, the Hmm. one stock, because I purely believe in technicals. Right. Though I know fundamentals, but I don't study them much, Hmm. because I don't like spending hours of research, and then if charts can give me a stock in just 5 minutes, then why should I spend 1 hour, 2 hours, 3 hours, right? I mean, of course, but for that 5 minutes, I have I have invested my 12 years. तो Right. 12 साल के बाद ही मुझे वो अभी अभी 2 मिनट लगता है स्टॉक निकालने के लिए, ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में स्टॉक आता है। Right. Yeah, so but it's definitely you'll have to give time, if you're doing technicals, you'll have to give some time to study, Hmm. and then maybe in 2 5 minutes you can come out, देखते ही अब आपको Yeah. पता चल जाए कि बस ये स्टॉक लेना है। Yeah. So Absolutely. yeah, I have shared a small video, so maybe I will Hmm. just share that on Trinker pin tweet. Hmm. Okay, on stocks list, so I said Tata Motors, I have Tata Chemicals, I have Reliance, I have IRCTC. I'm looking for a good Hmm. up move, but I'm waiting for close above 880, 890. Then Hmm. I think we can see a good up move. Another stock I have is Bharti. I said Bharti, I'm holding from 660. And there are many stock. I mean, Polycab just broke out today. I had given last week only, I think, 2 3 days back. Polycab is there. Reddington also I had shared, and Hmm. I mean there are a lot of stock. So I will share the website also from where I search. So there is one website, trendline.com. तो वहां पे आप जा सकते हो, और मॉर्निंग में जाओ, अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज इफ यू वांट टू बाय अ स्टॉक फ्रेश विच Hmm. इज डूइंग फ्रेश मूव। सो Hmm. मैं क्या करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ, आई चेक, सिंस आई ट्रेड एफ एन ओ, आई चेक ओनली निफ्टी 50 एंड एफ एन ओ, बट Hmm. एज पर योर प्रेफरेंस यू कैन टेक निफ्टी 500 स्टॉक विच आर गेनर्स, अ बिग गेनर्स, टॉप 5, और उसमें से अगर मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ, अगर कोई अच्छा लगे तो वो मैं ले लेता हूँ। There is another website called Stockage, web app also there. So there I see weekly, monthly breakouts, and if I like some stock, I definitely buy those. So you can find many stock like that. You can find many stock every day. You will find some good stock coming out of consolidation breakout, and you can definitely grab the opportunity. So that's it. Right. I have a few of them. Right. Awesome. Thank you so much for that, sir. And I'll be waiting with holding my breath and waiting for the day when you make your portfolio. आपने आज बोल दिया है कि in the next 4 to 5 months you will make a portfolio, and I'll hold you on that, and I'll keep asking you until you make it. Yeah, yeah, yeah. One more stock I want to share is Adani Ports. I mean, Yeah. Adani Group is doing good, but I'm having Adani Ports, so that Hmm. also you can do well. Actually, बहुत सारे हैं तो लेकिन ऐसा हो रहा है कि कौन से स्टॉक लूं, कौन से नहीं लूं। Absolutely. Absolutely.
Thank you so much for sharing so many stocks with us, sharing the knowledge that you have with us. And हमारा एक plan है. So we were talking a few days back, I and Dikshit sir, and we had a deal कि हम लोग बहुत जल्दी एक series भी लाएंगे where we'll discuss. Sir will actually teach us a lot of systems, Elliott waves और जितने भी technical ये systems होते हैं, how do these work, and we'll do a video series on it. And I'll hold you for that, sir. हम लोगों को आपको करना पड़ेगा वो हमारे साथ बहुत जल्दी. Yes, yes, sure. I like to do it. All right, awesome. So thank you so much, Harsh Dikshit sir, हमारे साथ रहने के लिए. He is मतलब absolutely brilliant. I am a fan, and उनकी calls are, I mean, spot on. So thank you so much for that, sir. Thank you, Right. thank you. नेक्स्ट हम लोग दो हम लोगों के पैनल पे और लोग हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्यूट विनर्स, both figuratively and literally. Now figuratively तो of course winners हैं ही, but literally इसलिए because हम लोगों ने a few months back we had a competition called Trinker Street, and that is since when I really got to know these two stock market experts, and since then I've been in touch with them and I followed their calls. They have their portfolios on Trinker. I've been following those Trinkers. Now what Trinker Street was, एक कंपटीशन हमने करा था कि फॉर अ स्पैन ऑफ 2 weeks आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, and the competition was to get maximum gains in that span of 2 weeks. And in that price volume trader जो हमारे साथ अभी हैं, he was the first. He secured first rank in that span of 2 weeks. सर के massive returns थे उनके portfolio के in just 2 weeks. And strategist trader उदेश कुमार सर भी हमारे साथ हैं. He was the second highest gainer. He had the second highest gaining portfolio in that competition. So since then I've been following their calls and I've personally invested in their portfolios, and their portfolios are absolutely smashing. So let's begin with price volume trader sir. Sir, I am a fan. आपके बहुत अच्छे portfolios हैं. You are I mean uh, okay, so I think Twitter ने कुछ तो फिर से बदमाशी की है. I'll try to add him again. Meanwhile, strategist trader उदेश कुमार भी हैं. उनसे personally मेरी बात होती रहती है. He's associated with our app. हम लोग उनसे feedback भी लेते रहते हैं आपके बारे में, and he's always there with us. So, Udeshya sir, can I have some words from you? And also another thing about him, he's also very young, and yet he is doing such brilliant things in the market. So that is also, he's another young gun of stock market that we have on Trinker. So an absolute fan of that art as well. So sir, if I can have some words from you on your journey with Trinker so far. Hi, Vishu sir. Yeah. First of all, happy birthday to Trinker team. Thank you. I got the opportunity to talk with the product team of yours. Yeah. Yeah. And they are so hardworking and so dedicated towards their work. So that's immense thing. So you guys are doing a great job. Okay, so talk about my journey. My journey started with daily number. Hmm. Then I got into the Trinker competition, and I won the competition, means I got the second rank. So Yeah. I get associated with the Trinker team. So first of all, thank you for providing me this platform to showcase my skills and learn from such senior traders and investors. Right. Yeah, so Trinker, the USP of our Trinker product is the reality. The reality की जो ट्रेड्स हैं वो सही हैं. एग्जैक्ट प्राइस पता होना, एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस टारगेट्स, या जो भी इंडिविजुअल ट्रेडर का स्टाइल है, जिनका ये पोर्टफोलियो है. तो रियलिटी की बात है कि जैसे हम लोग बोलते ही हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि फेक गुरुज और रियल गुरुज हैं, कि ये बाई किया वो बाई किया. बट व्हेन यू ऑन द ट्रिंकर प्लेटफॉर्म, आपको पता है कि इस ट्रेडर ने या इस इन्वेस्टर ने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया है, इस स्टॉक में इतने % एलोकेट किया है. तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, जो हमें लगता है ट्रिंकर की यूएसपी है. Right. Absolutely. तो हाँ जी. Yes, please continue sir. या सो वो ये चीज है कि कॉपी ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉरेन कंट्रीज में तो है, इंडिया में ट्रिंकर इसको लाया है और 1 साल आज हो गया है. और द वे दीस गाइस आर ग्रोइंग and building the community, people are trusting them. Yeah. People want to connect with them, and you have different kind of portfolios related to sectors, portfolio related to momentum for long term custom purposes, and all of them are being real. You get notification real time. So because I got an opportunity to talk with the team, so they are so highly charged up and giving their level best to give best product to the customers. So kudos for that. Right.
Thank you so much for those kind words, sir. But truly speaking, we are here because of traders like you, and this is another one of the goals that we that has been there. So I think to identify these real gems. So you are so young, and of course, I'm sure in time you'll have a massive following on Twitter as well. Very soon, I'm very sure very soon you'll have 1 lakh followers, and then the next target would be 10 lakhs, and then 1 crore. But Trinker is one platform where anybody and everybody can come and showcase their skills and identify. I mean, those gems don't have to really rely on the number of followers they have. Just like strategist trader here, Desh Kumar sir, and uh, the only reason he's on top on Trinker is because of his portfolio's performance. So now, absolute hats off. He's one of our experts, and the reason is his performance and nothing else. So we are glad that you are there with us, and of course, unka Twitter channel is also very active. Please follow him on Twitter as well. And he's very young, he's very successful. Please follow him on Trinker as well and Twitter as well. And his portfolio is there. I have invested in it. You can too. It's a beautiful portfolio and it's a very well managed portfolio. Next, of course, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ what are your views on Nifty right now, broader stock markets right now, and कौन से stocks आपकी watch list में? निफ्टी पे व्यू इज लाइक आज हमने काफी लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेटिंग व्यू है कि हम लोग पॉजिटिव क्लोज ही दे रहे हैं, बट बैंक निफ्टी जो है एज कम्पेयर टू निफ्टी काफी वीकनेस शो कर रहा है, राइट. सो ये माइल्ड बुलिश मार्केट ही है. 18500 इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस राइट नाउ. सो टिल बजट आई डोंट सजेस्ट टू टेक. Hello. Right. So once again, Twitter has been glitching. We are really sorry for the interruption, but luckily, Price Volume Trader sir has joined us back again. Sir, are you there with us now? Hello, am I audible? Yeah. Yes, you are, sir. So right, so I was as I was saying, sir had the portfolio that gained the most during those 2 weeks, and I think उसके अलावा भी sir आपका portfolio was the one जिसमें कि within a span of I think was it 20 days जिसमें 45% returns थे, if I remember the figures correctly. Yes, yes. Right. So मतलब that was a brilliant dhamaka portfolio, and I have been following it, and it has been absolutely smashing knowing you since then. हम लोगों के उसके बाद हम लोगों ने पॉडकास्ट भी किए हैं, बहुत सारी बातें भी करी हैं, एंड हमेशा बहुत मजा आता है आपसे बातें करने में. And I have immense respect for your process, for your style of management. You can check out Sir's portfolio. It's there on our platform. You can quickly search through his name, and it's an absolutely smashing portfolio. सर थोड़ा सा आपसे भी आपकी जर्नी के बारे में सो फार जानना चाहूंगा. ट्रिंकर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सो ट्रिंकर पे मैंने स्टार्ट किया था जब कंपटीशन था. सो कंपटीशन से हमने स्टार्ट किया था, तब मेरा लाइक तब तो मेरे पोर्टफोलियो पे कोई इन्वेस्टर नहीं था. उसके बाद जब मैंने कंपटीशन जीता, उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स आए, जैसे कि अभी के 16 इन्वेस्टर्स हैं जो कि सही. मेरा पोर्टफोलियो लाइक एक्टिवली कॉपी करते हैं या फिर जो भी उससे ट्रेड करते हैं. और जैसे कि कंपटीशन में भी जो थर्ड थे, उन्होंने कुछ स्टॉक्स जैसे मेरे ही पोर्टफोलियो से कॉपी किए थे, तो उनको राइट. वहां पे भी एक अच्छा बेनिफिट मिला, अच्छा प्राइस मिला. उसके राइट. बाद भी जिन्होंने भी कॉपी किया था, तो अभी तक वो पॉजिटिव में ही होंगे. और हमारा एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा रहा है. कोई ज्यादा ट्रेड्स हमने अभी तक लॉस में वहां पे बुक किया नहीं है. एंड प्लस ट्रिंकर को मैं देख रहा हूँ, हमने हमारा कंपटीशन आई गेस नवंबर में था, अक्टूबर एंड या. में था. तो वहां से राइट. अभी लाइक 25,000 प्लस यूजर्स हो चुके हैं शायद. या. हाँ, तो तब से काफी यहाँ पर ग्रोथ आ चुका है. और अभी अगले 2-3 महीने में जहाँ तक है, हम 1 लाख भी क्रॉस कर ही जाएंगे. और सो जल्दी सर, आपके जैसे ट्रेडर्स हैं, आई एम वेरी श्योर फेब में ही हो जाएंगे. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा एम आई ऑडिबल सर? हेलो. है. हाँ, अभी ठीक है. ओके. सो मैं कह रहा था सर, आपके जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो लेने के लिए फेब में ही हो जाएंगे 1 लाख. 25,000 भी इसीलिए हुए बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट्स लाइक यू देयर,
एंड आपने बहुत अच्छा याद दिलाया वो, it went out of my mind. So जो third rank थी, they had actually so in our competition on Trinker, of course it's about copying portfolios, following others portfolios. So we'd actually allowed copying in our portfolio, in our in our competition, कि आप कर सकते हो copy औरों का portfolio, and that would also be counted as real. And what happened was, first prize of course sir का था, second strategist trader जो हमारे साथ है उनका था, these were their original portfolios. And जिनकी third rank थी, uh, his name was Prashant sir, I think, and what he had done, he had simply copied price volume traders portfolio. Within a span of day or two, I think शायद immediately बनते ही copy कर लिया था, या within a span of day or two he had just copied his portfolio. तो उनके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स सर का पोर्टफोलियो ऊपर गया, एंड जिनका थर्ड रैंक थी उनका भी उसी तरीके से ऊपर जाता गया, बस थोड़ा सा ही वो एक आध डेसिमल पॉइंट्स में फर्क में थोड़ा सा ही पीछे था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो थोड़ा टाइम बाद उन्होंने एंट्री ली थी. And that is how he came third. So he didn't actually have an original portfolio. We had so many brilliant portfolios, and but then again, so that was another, we realized, we of course were totally passionate about it and involved in it, but we saw it for the first time as an evidence कि how successful this concept can be, कि just a few decimals away and he made exactly same profits as sir. So hats off to you sir, first or third rank actually आप ही की थी उसमें. Right. So, right, sir. Next, sir, of course, I would want to ask you some of your views on, stock markets in general and some stocks that are there on your watch list right now. ओके, तो निफ्टी पे अगर हम व्यू लें तो निफ्टी 700 पे मैंने पोस्ट किया था, वहां से क्लियर हम 5-6 डेज अभी तो एक तरफ रैली दे रहे हैं, और आज भी हमने एक अच्छे लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो क्लियरली ये बुलिश या फिर बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें किसी भी तरह की कोई वीकनेस अभी नहीं दिखती. प्लस अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम जाएं तो आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला पॉली कैब में, जिसको मोस्ट प्रोबेबली मैं पर्सनली भी इसको यहाँ पे बाय करूंगा ऑन डिप्स. 2650 का अराउंड बेस्ट लेवल रहेगा जहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2400. All right. तो अभी के लिए यही पिक रहेगी. All right. Awesome. Thank you so much for sharing that, sir. This has been amazing. Thank you so much. And हम लोगों ने of course podcast किया है, but बहुत जल्दी आपके साथ भी एक और dedicated podcast मुझे करना है, and to learn more about your process and you and your journey in market so far. Sure. All right. Awesome. Thank you so much for joining us, sir. Thank you. Right. So, Strategist.Trader, sir, you got cut off in between. Sir, are you there with us now? Yeah, sure, sir. Yeah. Please, sir, please continue. You got interrupted by Twitter, I think. Twitter हमेशा बदमाशी करता ही है मेरे साथ. बहुतों के साथ करता है सर. So we may have figured out, for our audience, we may have figured out one thing. So Twitter is actually partial. What we realized was our guests from iPhones and iOS were kicked out less compared to Android phones. So we have been experimenting it over the past 2 days, and so far for me this has been working. So we'll try to figure out something around this, if this can be done on a sustainable basis. But apparently this is a bias that Twitter has apparently, कि वो Android users को ज़्यादा kick out करता है and iPhone को कम करता है. तो we'll figure out something around this. Yeah, right. Yeah. I'm an Android user only. हाँ, so सर मैं भी Android ही था. आज मैंने स्पेशली किसी से मांग के हाथ पे जोड़ के ये वाला आज यूज कर रहा हूँ कि ट्राई करके देखते हैं. Yeah. Right. So sir, please continue. The stocks which I have selected for momentum purpose, that these stocks are LT, Polycab, and RateGain. So Polycab is given by most of the experts. Even I share the charts on the Twitter also. Before. So Polycab is given a good breakout with good volumes. Yeah. We can track Polycab. RateGain today I was thinking to buy in my Trinker's portfolio. I think it was not added or something. So I was not able to add it. Yeah. So these are the three stocks in LT and Polycab. Okay, awesome. And sir, if you have to choose one of them for like tomorrow, which one would it be? What are you most bullish on amongst these? Polycab, as prime volume trader, has also a Polycab. Right. LTD is also, last night is also a lifetime high given a horizontal breakout. Horizontal breakout itself is a very credible breakout, and the stock is lifetime high 2018. So this is also a stock we can track for upcoming week and tomorrow. Other than this, Polycab, RateGain is a good stock. It's a recent IPO.
इंडस्ट्री डाउन ही हुई थी, लेकिन उसमें मोमेंटम आ चुका है, तो उसको भी अपने पोर्टफोलियो में, ट्रिंकर पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है। Absolutely, I'll be waiting for it, and I'll definitely follow it as soon as you get it. Tomorrow I will add, rate gain I think was not available today, so Right, tomorrow. definitely, and I'll follow you. Thank you Yeah. so much for that. Right. So, thank you so much for being here tonight. And of course, next we have Davinder Khurana sir has also joined us. And it's even special. Davinder sir is probably the number one trader that we have in the most senses possible. He has got the maximum investors on Trinker. He has got maximum returns on Trinker. He was one of the first people to test our app, and he has been there with us since the very beginning, right from developing this product to be where it is today. He has been a part of Trinker family from the very beginning. Hamara first ever podcast was with Davinder sir. I still remember that day. हम लोगों के we had hardly a few 300 odd followers, and सर के भी since then I think 7-8 times following बढ़ चुकी है. एंड इमेंसली ट्रिंकर जहाँ पे है उसमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रिक जो कहते हैं ना नींव जब रखी गई ट्रिंकर की, तब से सर हमारे साथ हैं. वी हैव बीन ट्रैकिंग हिज पोर्टफोलियो सिंस वेरी 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 लॉन्ग टाइम. And he's absolute gem of a trader, absolute gem of an expert. फंडामेंटल से इनका पूरा मुझे इतना क्लोजली बात हुई है इनसे, इतना हुआ कि फंडामेंटल्स से शुरू हुई थी सर की जर्नी. ही ट्रैक्स टेक्निकल्स एज वेल नाउ, एंड absolutely brilliant calls देते हैं सर. उनका portfolio is smashing, highest returns, highest number of investors. I can't praise him enough for his everything. And today is even more special because आज ट्रिंकर का तो बर्थडे है ही, बट दविंदर सर का भी बर्थडे है. सो इट्स डबली स्पेशल डे फॉर अस. एंड ऑफ कोर्स जो हम लोगों का पोर्टफोलियो, लाइक आई सेड कि आज हम लोगों ने एक पोर्टफोलियो क्यूरेट किया था जिसमें कि कुछ स्टॉक मार्केट, हमारे जो टॉप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने बात करी एंड उनसे कुछ स्टॉक्स लिए, एंड देन वी क्यूरेटेड दिस पोर्टफोलियो. द लिंक इज पिन्ड ऑन आवर प्रोफाइल, यू कैन चेक इट आउट. उसमें दविंदर सर से भी हमने 2 स्टॉक्स लिए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे. बट फर्स्ट, दविंदर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड टुडे आपका बर्थडे भी है, लोहड़ी भी है, उसके बाद भी आप हमारे साथ ज्वाइन किया आपने. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई वांट टू आस्क थोड़ा बहुत आपकी ट्रिंकर के साथ जर्नी कैसी रही उसके बारे में. Sure, thanks, Vishu. Thanks for so kind words. Yeah. So, thank you everyone who has joined and taken their time out. So, yeah, my journey with Trinker has been a very smooth, I would say. It's not kind of a roller coaster ride, which most of journey we start with. So, Trinker, I think you guys have a great team, great product team, great dev team. Everyone is so supportive and. Uh, One thing I think I like most about Trinker is how quickly they implement the feedback any trader give them. So which is like kind of very important thing for a company or a or for a startup. They listen to their customers, whether it's real traders, whether it's people using their product as a follower. So yeah, I think product has developed a lot from the very beginning. So when once we started, I mean, I think we were at most probably, I think we were at around 30-35% of what we are today. So I would say like it has grown around 300% from where it started. So yeah, so journey has been good. Like I actually got a chance to meet very young talented people from different spaces within Trinker. So yeah, thanks for giving me opportunity to interact with so many bright minds. Yeah, so that's it. I think yeah, in a nutshell, this is my story and my Right. interaction with Trinker so far. Right. Thank you so much for those kind words. And of course, like you said, feedback matters so much to us. And of course, that is the only Yeah, way right, we have to grow. So, I mean, we'll put our hearts out, and, we have to make this successful anyhow. And of course, feedback is the only way we know which direction to go towards. right, Uh, in fact, very soon, many more features are coming to Trinker. Keep your eyes peeled out for that. We have feeds coming in very soon. We have 10 to 12 more brokers coming in, and we are every day. So Trinker is probably, I think, one of the apps for which you'll get most of the मतलब इतना quick succession में आपको updates मिलेंगे Play Store पे. Every 2 days you would be getting an update, because we are working 24/7 to
get this platform built up as soon as we can. And for instance, the latest feature that we rolled out was archiving portfolios, which was a huge demand from many people. So what used to happen initially, our thought process was कि nobody should be able to delete their portfolios once they have created it. But then because we want full transparency, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो बंद कर दिया. बट इससे हुआ ये कि वो एक क्लटर होने लग गया पोर्टफोलियोज का कि जिन लोगों को प्राइवेट भी है चाहे वो है, वो क्लटर होने लग गया था. सो देयर वाज अ ह्यूज रिक्वेस्ट. सो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड एन फीचर आर्काइव पोर्टफोलियो, जिसमें कि अगर वो इफ इट्स अ ब्लैंक पोर्टफोलियो, देयर इज नथिंग इन इट, तो it will automatically get archived. It will still be there, but it won't clutter your Trinker profile कि उसमें आपको ढूंढना पड़ रहा है कि मेरा वो पोर्टफोलियो का है, वो का है. If it's an empty portfolio, it will still be there, you'll still be able to see it, but it won't disturb your experience of using the app. So do update your app. हमारा archive वाला feature आप check करो. And of course, then we have introduced timelines now. If you haven't updated our app in a while, now you can see timelines की portfolio journey कैसी रही. So this was also a very highly requested feature कि initially we used to show just the returns that have been generated, but now you can actually see the graph. जैसे आप charts देखते हो किसी भी stock के कि वो कैसा perform किया उसने, and then you decide क्या करना है. Now we have graphs of these charts of portfolios. So you can actually see their performance की compared to Nifty, उनकी performance कब कैसी कहाँ रही, तो आपको बीटा वगैरह उसमें दिख जाता है सब कुछ. So such features we are bringing every day. Please do check them out. Update your app if you have Trinker already, and make the best of these features. Right. Davinder sir, next of course I want to ask you about thoda sa what is your Positive. So the bias is like if we consolidate, above like 50 DMA, which was so yeah, if we trade above 17,600 odd levels, 640 odd levels specifically, so it will be very bullish. This 500, 450 points, I mean, absorption range will be there where we are likely to consolidate for few days. But again, like the bias is very positive, and a lot of mid cap and small cap stocks are also participating in the rally, which actually tells that there is good market breadth, and I mean, it's not like only indexes are getting pumped up, but it's overall performance of the stocks like which matters and which makes the market healthy. So yeah, I mean, as of today, like our markets are healthy. So yeah, few days back also, like I mentioned, right? So if 16 sorry if yeah, if 17,200 around we were trading, so I mentioned, like I mean, we have made the bottom at 16,400 already, so this market should go up from there. So far, like I mean, what I was expecting, I mean, it has been the journey. So what I expect from here is like maybe a little bit cool down. We saw cool down in Bank Nifty today. Bank Nifty was up some 9 days in a row. So that's where like most of short term tops are made. So most likely, like if we consolidate within a narrow range of let's say 1,000 point or 1,200 points on Bank Nifty, and 350 to 400 points on Nifty, it will be very very positive. And then probably next rally should be I mean, should hit Nifty to all-time high, and possibly we can see like a 19,000 level also in the month of February. So that's what I am expecting. So yeah, bias is bullish, and from global point of view also, like most of the growth stocks in US market which I track, so they are kind of completing their capitulation stage where they are down somewhere between 75 to 80%. So they also see some good uptick and a bullish bias from the current levels, and we'll see like Nasdaq also hitting new high. So that's on the US point of view, which is kind of a mother market uh, for the whole globe. So probably I think, yeah, uh, we must be looking a good time in Nifty and Bank Nifty, but again, like volatility will be high because we are entering into budget month in next 2 weeks, and most of the companies will also report their earnings. So like the next 1,000 point rally, I would say like it will be a little bit high on volatility compared to what we have seen so far. Yeah. right?
Absolutely. Thank you so much for sharing that with us, sir. And next, of course, I want to ask which stocks, if there, what are which are there in your watch list? And of course, besides then that थोड़ा सा जो portfolio हम लोगों ने आज आपकी help से curate किया उसमें आपने दो stocks किए और आज में I think they have performed very well. तो उनके ऊपर भी if you can shed some light. Okay, so yeah, I'm tracking few stocks like which have performed really well. Trident is one, I think, which has gone up significantly from last 3 4 days. It's up somewhere between 15%. So that was one good stock which was trading in a narrow range from last 3 weeks, and it formed like WTC. So that stock gave breakout around 51 52. Actually, I was busy like with some family engagement this week, so I couldn't trade like most of my names this week, and I was very inactive on Twitter also. So most likely, I think I'll get some time out from here on, and will be active on Twitter also. So yeah, so Trident is one stock. Sebco, which we bought in our opener portfolio, it has done extremely well. It's up some 10% in a week. So apart from these, like two digit stocks which I'm tracking, like other stocks are like FCL, Finotex Chemical, Century Textile, Mirja International, Poonawalla. So these are few good stocks like which are ahead of price action cycle, if I say. So probably these are the stocks which one should look out for, not only for like 1 to 2 weeks, but probably next 6 months. So these stocks probably can outperform the market in next 2 quarters. So FCL, Century Textile, Meja International, and Poonawalla. So I think I'll probably yeah, keep these four stocks in my watch list, and probably will trade also. Absolutely. And sir, thank you so much for sharing that. And thoda sa sir, if you can give a little more detail about Poonawalla and there was one more Mirja. stock. Mirza Mirja. International. Sorry, yeah. Yeah, so Mirja, I mean, is kind of a story stock as of today. So I like story stocks and I like growth stocks. So these are the two stocks which generally give you bigger returns. So let me explain a little bit about what is a story stock. So story stock is kind of a stock where company is not reporting very healthy sales growth or very healthy profits growth, but still the stock price is going up, right? So these type of stocks generally go up because of the institutional demand, and the institutional demand can be of anything, like there is probably a story going behind any sector, which we call it as a sector tailwind, or probably there is some story about uh, you know uh, some macroeconomic changes happening, or there could be a story about management change. So these are all the catalysts like which can make any company or any stock run like anything. So when I talk about uh, you know when I talk about Mirja International, so the story behind that stock is demerger. And I mean, this stock is basically, I mean, most of you might be knowing that Red Tape shoe brand, right? So they own the brand Red Tape, and in last few years, like company has been migrating its product range from leather to sport shoes, as well as apparel business. So most of their you can say business was concentrated in the leather segment uh, for many decades, which is now turning into multiple segments. And the good thing about the other segment is they are high in margin, and they're high in growth also. So if you look at their apparel business, it's growing somewhere between 20-25%. And in fact, if you look at the last quarter improvement from the segment point of view, I think I mean, that particular segment did some 35% growth. And the second thing is, their sports shoes brand. So they're selling their products with the Red Tape brand. So we can say that they're pretty much using their moat on the brand name, and using the same branding. Obviously, like, people trust the brand. So yeah, so sports shoe segment is also growing somewhere between 20-25%, and they're targeting like the middle range type of segment. So their products are not uh, very I would say like very expensive, similar to Adidas or Nike, but they are kind of middle in range and better in quality. So that's where their edge is. So they're targeting middle segment.
and they're selling high volume products, I can say. So these type of business, if they pick up, then scalability is very high, and most of their distribution channel are D2C, direct to customer. So they don't have any retail outlet, they don't have so much money spending on those retail spaces. So D2C business is always a better business in term of you can say a consumer product, because margins in D2C are much higher than if someone is selling their products on retail. So that's another positive which is happening. And and the third important part which I was talking about was demerger. So they're demerging their India business, and their export business is kind of very stable. So they have few contract manufacturing for a few of the companies, global companies, which they do. And in contract manufacturing, like, their margins are very low. And again, like, export is kind of a stagnant business. So when the company is shifting their focus only on India business, that's where the most of the value will be generated. And from the price action point of view, the stock has seen a very good institutional volumes. We can clearly see that institutional footprint in the stock. So I generally track stocks based on the characteristics which few other stocks might have possessed in the past. So these stocks fall into my 95% criteria. I call it as 95% club. So there are few characteristics of a few stocks which falls into that 95% club, and I call them as monster stock. So this can be a monster stock, and uh, most of my monster stocks which I traded in last 4 for 5 years, they have the capacity to give you like 4x, 5x, or in fact 20x type of returns also. So Alkyl Amine, Balaji Amines, Acryzyl, Tata Elxsi, Mastec. So these are many names which I traded last year, which went up some 600, 800%. They also possessed, the characteristics of a monster stock. So yeah, probably, if things go well, then this is a candidate which can do maybe 6x to 20x in another 2.5 year. So that's all about Mirja, which I'm tracking. And yeah, the second stock is Poonawalla. Poonawalla is another story stock. I don't know like what is happening from the accounting or balance sheet point of view in that company, but the story is the management change. So the earlier company name was Magma Fincorp, which was taken by owner of Serum Institute, Poonawalla, Adir Poonawalla. So everyone knows the execution skill of that guy, right? So uh, we are talking about COVID, and he was the first one who actually did vaccine on Covishield, and had a contract with AstraZeneca, licensed their technology, put up everything in India, and started manufacturing. Started manufacturing the vaccine here. So these are skilled people. I think if they are investing and they are taking over any company, then we can say that the aspect of that company is really good. So in fact, like, we bought this stock in Trinker portfolio also on 29th of December. I added that stock at 208 levels, and within just 2 weeks it's almost up 50%. So it made a high of some 303, 304, and now it is trading around within like 10% range from its new all-time high, which is around 270 to 280. I think today also it closed around 285, which is a very positive price action. And if you look at the volumes also, there is significantly strong volume support. So it's a clear indication that this stock is under institutional radar, and they're actually accumulating this stock. So if I go by the story behind it and the institutional support, then probably I think this can also be a good growth story. I don't know like if it can be a monster stock or not, but definitely, like, there are high chances like it will double from here also. Yeah. Absolutely. Absolutely. Thank you so much for sharing that detailed explanation with us. Of course, these stocks are available in the portfolio that we curated today in the morning. And interesting about this, I just tweeted, this portfolio is up by more than 1%.
And if you go to my profile right now, Vishu Karthik's co-host profile, Twitter profile right now, you'll see I've posted two images side by side. One of the screenshots is that of this portfolio, and I had invested after nearly 1.5 hours or something of creation of this portfolio. And my portfolio is also up. I have all the stocks that are there in this portfolio, and my journey has already started moving in the same direction as this portfolio. So I just wanted to, share how your portfolio would be created and how your journey would be. Of course, I have already got my cashback. You can also get your cashback in this portfolio. 300 rupees ka straight up cashback we are giving away because it's our birthday and we want to celebrate it with all our beautiful listeners, beautiful audience tonight. So do invest in this tomorrow. The link is pinned on our Trinker profile right now. Even the tweet that I just tweeted, the link to that portfolio is there as well. If you want to check out, if you don't have Trinker yet, the same link will help you download it. If you have it, you can invest in it, and the how to do it on my profile itself. Fourth in those two screenshots. So side by side screenshots, you can check them out and have your own screenshots with that portfolio. We already got rationale for these stocks from Davinder sir, and market scientist was also here earlier, and he also shared the rationale for the stocks that he suggested. And there are three more stocks in that portfolio. You can check them out, which one they are, in the through the link. Finally, Davinder sir, once again, thank you so much for sharing all that wealth of knowledge with us, for being there with us from the very beginning. You've been, you are like, so we have a small group called Friends of Trinker, जिसमें कि sir हमेशा रहते हैं, and he is probably the most active participant in that group, and he has been a true friend of Trinker since the very beginning, and I can't thank you enough for that, sir. Yeah, it's pleasure to have there. Right. And of course, there's one more thing I just wanted to announce tonight. So so far our podcast has been all about stock market experts and their journeys. But now we are a family of more than 25,000 investors जो कि अलग-अलग portfolios को follow कर रहे हैं, trade कर रहे हैं, अपने portfolios बना रहे हैं. So in the coming few weeks, we'll also do a special podcast the on which the guests would be the followers. So even right now it's 11:30 at night. Over 200 people are listening to us since past 2 hours. At some point we had over 400 listeners. So all of you who are there, please, you are most welcome on the platform. If you follow any of these, great stock market experts on Trinker, do DM us. Please direct message us on Trinker profile, and that I follow this. You can tell us which trader you follow, and we'll try to connect you with the trader on this platform. We'll call you as a guest, and we welcome you to share your journey with Trinker. How has it been? And we would love to know your experience as well. जैसे आज हमने हमारे experts को पूछा, वैसे हम आपके भी experience जानना चाहते हैं. And we want you to share your experience with a broader audience कि how has your journey been with Trinker. आप हम लोगों को, अब फिर वो आपकी मर्जी, आप आके हम लोगों को कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए आप गाली दे देना हम लोगों को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए हम लोगों के एनकरेज कर देना और भी बहुत अच्छी चीजें करने के लिए. मतलब bricks and flowers both are welcome. Please do direct message us if you are following any of the great stock market experts available on Trinker, and we'll try to call both of you. आप जिनको follow करते हो, and the original portfolio maker and their followers on the podcast, and we'll try to talk through both of them, their journey, how has it been. So this is something we are gonna do in the coming weeks. Please do DM us if you're following anybody on Trinker, and we'll try to connect you with them on Twitter Spaces. Once again, thank you so much for all the traders, all the stock market experts and investors who are there with us on Trinker. आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों का ही support है, which is making us do more and more and more. We want to go far ahead, and जो अभी जितना किया, this is not even 20% of our platform is developed yet. The core is in place where you can follow experts, and you get notifications whenever they take a trade, and the core trading thing is in place. But very soon you'll have feeds, you'll have many more things coming up. So that is gonna be amazing, and all we need from you is your love and support, like you have been providing us, and we plan to go much ahead from this. And wherever we are and wherever we will be, it will be all thanks to our great stock market experts and our lovely audiences. So once again, thank you so much. Please make the best of our birthday gift that we are giving away.
invest in that portfolio tomorrow morning. And thank you so much once again for your time. Yeah, thank you.